बढ़ाना चाहते हैं इसमें। और यहां से आप जितना उत्साह हम दोनों को देंगे, उसी उत्साह और टोन और टेनर के साथ हम इवेंट की शुरुआत करेंगे। इन तालियों में मुझे मजा नहीं आया। और क्योंकि आज हम यहां मुंबई में मौजूद हैं, विघ्नहर्ता की पूजा वैसे तो हर जगह होती है, लेकिन यहां तो विशेष रूप से होती है। और उन्हीं गणेश जी की आराधना के साथ कि सब कुछ निर्विघ्न हो और जिस उद्देश्य के लिए हम सब ये कर रहे हैं वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो, मैं उनकी एक छोटी सी स्तुति के साथ इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कामयाबी की मंजिल मजबूर है मिलने के लिए हमसे, हमने कोशिश जो की है इतनी शिद्दत से। और कहते हैं कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन सा ऐसा ही हौसला और जज्बा दिखाया हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा एसएमईज ने। आज हमारा देश आजादी की 100वीं सालगिरह पर पूर्ण विकसित देश बनने का ख्वाब देख रहा है और इस सपने को पूरा करने में अहम रोल निभा रहा है हमारा एसएमई सेक्टर। न्यू इंडिया के ये पायनीज देश की कंपनी का, इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही थी, तब बिजनेस की दुनिया के इन दिग्गजों ने अपनी इनोवेटिव सोच और मेहनत के दम पर ही इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया। तो एक बार फिर से मैं अपने आप का परिचय देता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं दिनेश गौतम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस खास इवेंट, इस खास अवार्ड शो डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2022 में। इन होम ग्रोन एंटरप्राइजेस की बदौलत भारत दुनिया के नक्शे पर विश्व गुरु के तौर पर अपनी पहचान पुख्ता करता जा रहा है। देश का एसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार को लगातार गति दे रहा है। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारा आज संवारा, बल्कि भारत का आने वाला कल भी सुरक्षित कर दिया है। इन इंस्पायरिंग एसएमईज के इसी जज्बे को आज हम इस मंच पर करेंगे सम्मानित। लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मंच पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी हेड ऑफ मार्केटिंग एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट राहुल सिंह जी को। तो राउंड ऑफ द अप्लॉज। और इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एसएपी इंडिया की सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर नितिका दास जी को। उनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, क्योंकि आप मंच पर हैं तो ये मौका शायद हम सबके लिए बहुत खास हो जाता है। और अगर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको सुने तो इससे और क्या खास हो सकता है। इन तमाम दिग्गजों के बीच आपकी प्रेजेंस, आपकी कही बातें सबके लिए बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जरूर होंगी। लेकिन जब तक उनके पास माइक पहुंच रहा है सुरभि, मुझे एसएपी के इन दिग्गजों से बातचीत करने का मौका पहले मिलता रहा है, क्योंकि इस अवार्ड सेरेमनी का इससे गुजरे हुए सालों में मैं हिस्सा रहा हूं। और एसएपी ने जिस तरीके से इनेबल किया है, एम्पावर किया है हमारे एसएमईज को, वो अपने आप में बेजोड़ है। लेकिन वो किस तरीके से बेजोड़ है, क्या खास किया है उन्होंने, ये उनसे बेहतर खुद कौन बेहतर बता सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगी कि अगर हमें सबसे पहले राहुल जी को सुनने का मौका मिले, और ये बहुत जानना जरूरी है हम सभी के लिए यहाँ पर, कि आखिर किस तरीके से डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के पीछे एक सोच रही है, उस सोच को कैसे आप अमल में लाए हैं, ये बता। तो सबसे पहले एसएपी की तरफ से जितने भी हमारे गेस्ट्स आज आए हुए हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, और टीवी 9 का धन्यवाद करना चाहूँगा इस पार्टनरशिप के लिए, और अपने सारे कस्टमर्स और पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो देखिए, बड़ी कंपनियों की बात तो हर जगह होती है, उनको अधिकतर लाइमलाइट भी उनको मिलता है। तो 2018 में जब हमने इस मंच की शुरुआत करी तो ये आइडिया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे उभरती हुई छोटी मिड साइज़ कंपनीज के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा सके, और उनका जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में जो कि बहुत क्रिटिकल है, उसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो उस सोच के साथ ये शुरू हुआ था 2018 में। और
पिछले साल जो हमारी थीम थी वो थी एडवर्सिटी टू एडवांटेज, विच वाज उस समय कोविड के दौरान इन कंपनियों का जो कभी ना हार मानने वाला जज्बा था और जो स्पिरिट थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो थीम हमने चूज़ किया था। और इस साल जो जो हमारा थीम है वो है पाइनियर्स ऑफ न्यू इंडिया। ये उन्हीं कंपनीज को समर्पित है जो भारत के जो उभरता हुआ भारत है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। इनफैक्ट ये वो कंपनीज है जिन्होंने भारत को आज एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही ऊंची और लंबी उड़ान के लिए तैयार हैं। ग्रेट सर। बहुत ऊंची और लंबी उड़ान के साथ हम तैयार हैं। और नितिका 4 सालों से डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले साल मैं इसका हिस्सा खुद था और नितिका के साथ बात करने का, उनसे पहली बार रूबरू होने का मौका भी मिला था। अभी तक का एक्सपीरियंस नितिका आपका कैसा रहा? नमस्कार दिनेश जी, आपका खुद का सफर 3 साल से डेयर टू ड्रीम के साथ जुड़ा है। सही कहा आपने, डेयर टू ड्रीम का सफर 2018 में शुरू हुआ और आज तक हमारे लिए बहुत खास रहा है, हम सभी के लिए। इन 4 सालों में हमने 400 बिजनेस ओनर्स को रिकग्नाइज किया है एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया lot of these companies, these business owners have pivoted to become large organizations in these last 3 to 4 years. और सही कहा आपने, last year these awards were conducted online, COVID के चलते, और the response that we received was huge. Over 1200 nominations were received last year. 150 awards were given away. We have had Ministry of MSME participation every year. So year on year, these awards have been growing in popularity. And this year again, we've received very wonderful response from everyone, and 1500 plus nominations were received. Great experience, ma'am. So today we are all here after 2 years, 2 साल के physical अवतार में. So I would like to thank you and welcome all of you for being with us today. थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आपने उस एक्सपीरियंस के बारे में तो जरूर बताया जो पिछले सालों से आप अनुभव करती आ रही हैं, लेकिन राहुल जी अब मैं आगे विजन की अगर बात करूं, क्योंकि खास तौर पर यहाँ इनोवेशन की बात हो रही है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हम जिक्र करेंगे, इसलिए ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये दौर हमारे एसएमईज की कामयाबी में कितना अहम रोल निभाता है? बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभा रहा है। इनफैक्ट मैकिंजी की एक 2-3 साल पुरानी स्टडी है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है, जिसको वो कहते हैं मिसिंग मिडल, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। और उसके अनुसार अगर भारत को सचमुच $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है अगले 1 दशक में या उससे कम में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि करीब 10,000 कंपनीज जो आज छोटी कंपनीज हैं उनको अगले 3-4 सालों में मिड साइज़ बनना पड़ेगा, और उसी तरीके से कुछ 1000 मिड साइज कंपनीज को लार्ज कंपनी बनना पड़ेगा। तभी इंडियन इकोनॉमी में वो जो जिसको कहते हैं क्रिटिकल मास और मोमेंटम आएगा, जिससे आप लंबे समय तक ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं। तो एक तो ये रीज़न है, और इस तरीके से इस तरह का जो ग्रोथ होता है इस तेज़ी से और इतने छोटे समय में, वो बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के संभव ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमने खुद एक रिसर्च की थी लास्ट ईयर IDC के साथ, जिसमें 74% मिड साइज कंपनीज ने बोला कि वो अपने सारे एप्लीकेशंस को क्लाउड पे मूव करेंगे अगले 2 या 3 सालों के अंदर। तो ये उदाहरण है कि क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनको वो एक एजिलिटी मिलेगी, जिसको हम मार्केट डायनामिक्स बोलते हैं, लगातार आते हुए चेंजेस के साथ डील करने के लिए वो क्षमता मिलेगी, और उसके साथ ही अपने जो उनके जो फंक्शंस हैं कंपनी के अंदर वो इंटीग्रेटेड होंगे और एफिशिएंट होंगे, जो वर्ल्ड क्लास लेवल की एफिशिएंसी जिसको कहते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई विकल्प नहीं है। इनफैक्ट सवाल ये नहीं है कि मिड एसएमईज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए कि नहीं, सोच ये होनी चाहिए कि कितनी तेजी से कर सकते हैं। A good take from your views, sir. Thank you so much. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी। और कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोविड के दौर में
उस समय के लिए ये स्थिति होगी, लेकिन ये इरिवर्सिबल ट्रेंड बन गया। बहुत धन्यवाद हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए, क्या किया जा रहा है और आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यहां मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत एक बार फिर से उनका। और साथ ही हमारे बीच में है एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मिड मार्केट एंड इमर्जिंग बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सिंह जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं हेड ऑफ मार्केटिंग एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट राहुल सिंह जी, और एसएपी इंडिया की बिजनेस मार्केटिंग की सीनियर डायरेक्टर जो अभी आपसे मुखातिब थी नितिका दास। टीवी 9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास जी भी यहां मौजूद हैं। आप सभी का हमारे इस खास शो में, इस खास इवेंट में एक बार फिर से बहुत स्वागत। चलिए, तो मंच पर बुलाने से पहले क्या मैं इसी बात से कह दूं जो बात अभी मंच पर नितिका जी ने कही है कि किस तरीके से डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 का ये सफर बेहद ही मजेदार रहा है। और दिनेश, आप तो 3 साल से इस मंच पर इन तमाम दिग्गजों को सुनते भी आए हैं, तो क्या मैं आपसे भी सुनने और समझने की कोशिश करूं कि ये कितना अहम बन जाता है आज का ये खास पल। और इस शाम को आगे बढ़ाने से पहले, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इस सफर की कुछ खास झलकियां भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों। मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश ने साल 2047 तक डेवलप नेशन बनने के अपने मजबूत इरादे का ऐलान कर दिया है। अमृत काल के 25 साल की इस एस्पिरेशनल जर्नी के लिए सक्सेस का रोड मैप बनाने में अहम रोल निभा रहे हैं देश के 6 करोड़ से ज्यादा होम ग्रोन एंटरप्राइजेस। आज इन एसएमईज की देश की जीडीपी में तकरीबन 29% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा देश से होने वाले कुल निर्यात में एसएमईज की लगभग 50% की भागीदारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और अगले 1 दशक में देश की जीडीपी दुगनी होकर 8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। तेजी से ग्रो कर रहा एसएमई सेक्टर इस जीडीपी में 35 से 40% तक का भागीदार होगा। ये होम ग्रोन बिजनेसेस सशक्त बने और नए अवसरों के लिए तैयार रहे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए एसएपी के साथ मिलकर देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क टीवी 9 लेकर आया है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स। इन अवार्ड्स के जरिए हम देश के उन इंस्पायरिंग एसएमईज को सम्मानित करते हैं जिनकी मेहनत ने भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान दिलाई। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2021 की सफलता के बाद अब वक्त है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 के ग्रैंड सेलिब्रेशंस का। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जो डिजिटल फर्स्ट कल्चर के जरिए इनोवेटिव आइडियाज अपनाकर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अहम योगदान दे रहे हैं। India seems to be relatively insulated thanks largely to its small and medium businesses, which are the backbone of our economy. The Dare to Dream Awards 2022 then are meant to identify and celebrate such business champions. अवार्ड्स के विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया को पूरा करने और ट्रांसपेरेंट रखने में हमारे नॉलेज पार्टनर कार्नी ने हमारी मदद की। भारत के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरियल अवार्ड का जश्न फिर शुरू हो रहा है। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 में देश भर के 50 से ज्यादा होम ग्रोन एंटरप्राइजेस और बिजनेस लीडर्स को 12 कैटेगरीज में सम्मानित किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए इस मंच पर बिजनेस लीडर्स की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022। आप सोचें कि अगर कोई कोशिश की जाती है, मसलन सुबह उठने की ही कोशिश अलार्म लगा के, सोचिए कितनी मुश्किल होती है।
एक छोटी सी कोशिश के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और इन लोगों ने तो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने डेयर किया है ड्रीम करने का, और उसके बाद उन ड्रीम्स को हकीकत की धरती पर उतारने का। ये तालियां फिर भी मुझको कंजूस तालियां लगती हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए प्लीज। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मिड मार्केट एंड इमर्जिंग बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सिंह जी को, और साथ में टीवी9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का मंच पर स्वागत करें प्लीज। मैं गुजारिश करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से कि वो अपने शब्दों से हमारे देश के इंस्पायरिंग एसएमईज का हौसला जरूर बढ़ाएं और मार्गदर्शन करें कि कैसे सरकार अब कामयाबी के सफर में उनके साथ है। विशेष रूप से आज टीवी9 नेटवर्क के डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2022 के समारोह में उपस्थित है। टीवी9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ अफसर श्री रक्तिम दास जी, एसएपी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव सिंह जी, एसएपी इंडिया के हेड ऑफ मार्केटिंग श्री राहुल सिंह जी, इंडिया की एसएपी की इंडिया की सुश्री निकिता सिंह जी, हमारे साथ उपस्थित हमारा जो KVIC है, खादी के राज्य के निदेशक जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र को देख रहे हैं, हमारे साथ आए हैं, योगेश भामरे जी, और विशेष रूप से मेरा स्वागत करने के लिए अभी सर्किट हाउस में उपस्थित थे और यहाँ अभी उपस्थित हैं राष्ट्रीय कोरी समाज महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री केदार दास लखेपुरिया जी, उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, विशेष रूप से आज कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में जो यहाँ अवार्ड्स उद्यमियों को दिया जा रहा है, मैं सभी उद्यमियों का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर देश के विकास में, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है,
की जो देश भर में भूमिका है उससे सभी लोग परिचित हैं। इस भूमिका की व्यापकता का अंदाजा हम इस बात से ही लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे बंधु बता रहे थे कि भारत में एमएसएमई सेक्टर में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और देश की कुल जीडीपी का लगभग 1/3 एमएसएमई क्षेत्र से आता है। विशेष रूप से हम सब लोग जानते हैं कि इतना ही नहीं, देश के निर्यात में भी एमएसएमई का योगदान करीब 50% के लगभग है। वो एमएसएमई ही है जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अभूतपूर्व लीडरशिप में देश को कोविड-19 की प्राकृतिक आपदाओं से जनित नकारात्मक आर्थिक विकास से उबार कर आज विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। हमने देखा है कि हमारे प्यारे देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील को किस तरह से सिर आंखों पर लिया है और एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष को दुनिया के सारे देशों में सबसे ब्राइट इकोनॉमी बना दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया था कि हमारी जो स्थानीय वस्तुएं हैं उसका उपयोग हम सबको करना चाहिए। उसकी जरूरत ही नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है और यही हमारे विकसित भारत की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रधानमंत्री के आह्वान के मूल में अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन, महात्मा गांधी जी का ग्रामोद्योग का पुनर्जीवित करने का प्रयास और वीर सावरकर के विदेशी प्रतिबद्धता के खिलाफ राष्ट्रीय उद्योग की रक्षा का सरकार द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम में इन सिद्धांतों का सटीक मिश्रण है। हमारे देश में 2014 के बाद आम चुनाव के बाद ही एमएसएमई क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के महान अवसर मौजूद हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बलों की वृहद आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशीकरण के लक्ष्य को साकार करने की महत्वाकांक्षा को गति प्रदान की है। एमएसएमई नीतियों में व्यापक बदलाव व मेक इन इंडिया योजना के सफल क्रियान्वयन से आज भारत सरकार की नीयत और गंभीरता का अंदाजा भी सहज ही लगाया जा सकता है। एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना हमारा प्राथमिक एजेंडा है, जिससे कि हम जल्द से जल्द कुल आयातक देश से कुल निर्यातक देश बन सकें। एमएसएमई मंत्रालय इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर
काम कर रही है। अब तक के सबसे बड़े उद्योगपोत और मेक इन इंडिया के तहत निर्मित पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत में MSME का एक बड़ा योगदान इसका जीता जाता उदाहरण है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि MSME क्षेत्र में आज विशेष रूप से, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कोरोना काल में हमारे MSME क्षेत्र ने ही अपनी क्षमता के बल पर हमें उसे उबारने का काम किया है। जिस देश में कोई सैनिटाइजर नहीं थे, अन्य कोई उपकरण नहीं थे, लेकिन MSME क्षेत्र ने इन सारी चीजों को बनाकर हमारा कोविड महामारी की जो को हमारा देश झेल रहा था, उसे बड़ी सफलता के साथ उन्होंने इसे उसमें सफलता प्राप्त करने का काम किया है। और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी चिंता की। उन्हें लग रहा था कि हमारी जो छोटी छोटी यूनिटें हैं, छोटे छोटे हमारे उद्योग बंधु हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम करते हुए कोरोना काल की वजह से उनकी फैक्ट्रियां किसी कारणों से रुग्ण पड़ गई थी, किसी तरीके से बंद हो गई थी, किसी तरीके से वो अपनी कारीगरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता की और विशेष रूप से उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए इन MSME के जो सेक्टर हैं, अन्य उद्योग बंधु हैं, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए पैसा देने का काम किया। और विशेष रूप से 3.5 लाख करोड़ ही नहीं, 3 लाख करोड़ ही नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपए और उन्होंने देने का काम किया। इस तरीके से उन्हें 4.5 लाख करोड़ रुपए ECLGS योजना के अंतर्गत ये पैसा दिया गया। और विशेष रूप से अभी 2022-23 का जब बजट पेश किया गया तो हमारे वित्त मंत्री जी ने उस 4.5 लाख करोड़ को बढ़ाकर उसमें 50,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए। इस तरीके से 5 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज इन यूनिटों को किसी तरीके से सिक न करें, किसी तरीके से इनका काम न रुके, इसलिए उन्हें आर्थिक मदद देने का काम किया है। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं जो 5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज ECLGS योजना के अंतर्गत मिला था, उसमें से अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए इन छोटी छोटी यूनिटों को दिया जा चुका है। कुछ यूनिटों को और आगे भी दिया जा रहा है, क्योंकि इस योजना को उन्होंने आगे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। मार्च 2023 तक बढ़ा के इस योजना को लागू किया गया है कि किसी तरह से अभी भी कुछ हमारी यूनिटें अगर उस चीज़ों से नहीं हो पा रही, कोरोना काल से नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी अभी भी इसका लाभ ले सकती हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और आज का दिन बेहद खास है। मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ देश के सफल कारोबारियों की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2022 इसकी सफलता का सम्मान समारोह है, क्योंकि आप सब अपनी मेहनत और लगन से भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान दिला रहे हैं। 2047 तक आज़ादी की जब 100वीं वर्षगांठ पर हम सबने विकसित भारत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और भारत के लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा MSME से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के लिए दिन रात मेहनत करके इस सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हमारे सफल कारोबारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, हमारे सफल कारोबारियों मतलब ये उद्यमियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं TV9 नेटवर्क और सर्फ इंडिया की सराहना करता हूं, जिन्होंने प्रतिभावान हमारे MSME की मेहनत को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2022 का आयोजन किया है। इस सम्मान के जरिए न सिर्फ उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि देश के युवा उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा। वो ये बिजनेस लीडर्स हैं
जो डिजिटल फर्स्ट कल्चर के जरिए इनोवेशन आइडियाज अपनाकर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पारदर्शिता के साथ चुने हुए इस अवार्ड के सभी विजेता सम्मान के हकदार हैं। विशेष रूप से मैं आज इस मंच से सभी का आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में एमएसएमई मंत्रालय श्री प्रधानमंत्री जी के विजन और नेतृत्व में आवश्यक ट्रेनिंग, क्वालिटी में उत्तरोत्तर सुधार व सघन R&D के माध्यम से अपने प्यारे देश को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों की सफलता के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र बनाने में पूर्ण निष्ठा व बने से लगा रहेगा। मैं विशेष रूप से मुझे आज से कार्यक्रम में यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं सभी का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से टीवी 9 नेटवर्क के और हमारे एसपी जिनके माध्यम से ये सारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सभी जो अवार्ड्स पाने वाले हैं उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। भानु प्रताप वर्मा, उन्होंने विजन बताया, देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। और खुद भानु प्रताप जी वहाँ जमीन से जुड़े हुए लोगों में से एक रहे हैं, लोगों की नब्ज समझते हैं, क्या समस्याएं आती हैं। विधायक भी रहे 96, 98, 2004, 2014 और 2019 में वो संसद के लिए चुने गए और अभी ये मिनिस्ट्री देख रहे हैं। तो जाहिर है इनसाइड आउट समझते हैं लोगों की समस्याएं, क्या एस्पिरेशंस हैं इंडिया के आने वाले दिनों में उसको लेकर और क्या किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर इस उद्बोधन के लिए। और अब हम फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ कहा, आप लोगों ने सुना क्या? फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग लंच के बाद थोड़े से नींदे हो रहे हैं। थोड़ी नींद आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, मैंने तो अभी मैंने लंच तो नहीं किया, लेकिन इस ब्लैक कॉफी से जो रही सही नींद थी उसको भी भगा दिया। और आप लोगों की तालियां ये बता रही हैं कि अभी आपको नींद है हल्की हल्की। अगर नहीं है तो एक बार बताइए, क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने आपके लिए रातों की नींद त्यागी है, इस देश की तरक्की के लिए अपने आप को दिन रात खपाया है, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब रिक्वेस्ट है फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड सेरेमनी के लिए हमारे साथ सर एक बार फिर से आएंगे, भानु प्रताप सर, और एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मिड मार्केट एंड इमर्जिंग बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सिंह जी और टीवी 9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास सर फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स के लिए मंच पर पधारें प्लीज। और आप सबसे गुजारिश है कि बीचों बीच आ जाएंगे मंच के, प्लीज बीचों बीच, थोड़ा और इस तरफ आए मेरी तरफ। जी जी, यहाँ पे धन्यवाद। और अब हम अपने आज के फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स की घोषणा करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, इस अवार्ड में हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी ऑफ द ईयर को चुना है। ये वो कंपनीज हैं जो भारतीय एसएमई सेक्टर को तरक्की का नया आयाम दे रही है। कंपनी ऑफ द ईयर लाइफ साइंसेस के लिए हमने 2 कंपनियों को चुना है। पहली विजेता कंपनी है ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल्स। ये एक इनोवेशन लेड भारतीय मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी का मकसद रिसर्च से लेकर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट तक अफोर्डेबल प्राइसेस पर अपने सभी कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विसेज देना होता है। आपको इस खिताब के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी आप प्लीज इन तालियों पर विराम ना लगाएं, तालियां बजती रहे, क्योंकि ये फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आपको हमने बताया, कंपनी ऑफ द ईयर लाइफ साइंसेस के लिए हमने 2 कंपनीज को चुना है। तो पहली विजेता कंपनी आपको यहां पर हम बता दें, ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल्स। जोरदार तालियां प्लीज, आप तालियों पर विराम ना लगाएं। और इस बीच आपको मैं यहां पर बता दूं कि किस तरीके से अलग अलग कंपनीज का बारे में ये घोषणा हम कर रहे हैं।
दूसरी विजेता कंपनी यहाँ पर साई सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो 1989 में कंपनी की ये शुरुआत हुई थी। मेटल और केमिकल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं। इस खिताब के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दूसरी कंपनी, उसका नाम एक बार फिर से अनाउंस करता हूं मैं, साई सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही पहली विजेता कंपनी हमने बताई ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल, जो एक इनोवेशन लेड भारतीय मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी का मकसद है रिसर्च से लेकर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट तक अफोर्डेबल प्राइसेस पर अपने सभी कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विसेज देना। इस खिताब के लिए बेहद शुभकामनाएं। और अब इस कैटेगरी में हमारा अगला अवार्ड है कंपनी ऑफ द ईयर IM&C। इस अवार्ड के लिए हमने दो कंपनियों को चुना है। पहली विजेता कंपनी है इंपीरियल ऑटो कंपनी, भारत में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स OEMs के लिए लीडिंग सब वेंडर है। आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। कंपनी ऑफ द ईयर IM&C। टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लीडिंग सब वेंडर। जोरदार तालियां। और दूसरी विजेता कंपनी है सुदिशा फाउंड्री। सुदिशा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देश के ईस्टर्न रीजन में लीडिंग फाउंड्रीज में से एक है। कंपनी के पास ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, पाइप फिटिंग्स और अर्थ मूवर्स जैसे 150 किलो 150 केजी तक के केटरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है। सुदिशा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। और इस कैटेगरी का अगला अवार्ड है कंपनी ऑफ द ईयर CPG एंड रिटेल, और इसके लिए भी हमने दो कंपनीज को चुना है। पहली विजेता कंपनी है फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी CCTV सिक्योरिटी में पूरे देश में आज टॉप ब्रांड बन चुकी है और इंडियन स्टैंडर्ड्स और मार्केट रिक्वायरमेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए ये कंपनी हाई क्वालिटी वीडियो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। जोरदार तालियां। और दूसरी विजेता कंपनी है पेरल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दूसरी विजेता कंपनी एक बार फिर से बता दें, पेरल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्ट और रिलायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लेवर, ये वो 4 कॉर्नरस्टोन्स हैं जिन पर पेरोल ग्रुप विश्वास करता आया है। पेरोल की तरफ से बहुत स्वागत है आपका। और जैसा हमने आपको बताया, पेरल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लेवर्स, ये 4 महत्वपूर्ण बातें जो इस कंपनी को यहां तक पहुंचाती हैं। आपको बहुत बधाई। और अब कंपनी ऑफ द ईयर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस अवार्ड के विजेता पंचशील रियलिटी। साल 2002 में शुरू हुई पंचशील रियलिटी भारत की फाइनेस्ट लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक कंपनी। लग्जरी होम्स और ऑफिस स्पेस डेवलपमेंट की हाई क्वालिटी के लिए कंपनी को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है और उनको इस खिताब के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल अवार्ड की विजेता कंपनी है बेस्ट वैल्यू केम।
ये कंपनी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स के मामले में भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और कंपनी की तरक्की का अंदाजा भी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज एक्सपोर्ट मार्केट की कुल बिक्री का कंपनी लगभग 80% कवर करती है। जोरदार तालियां अवार्ड के लिए भी बेहद शुभकामनाएं। बेस्ट वैल्यू केम के बाद अब आइए प्लीज आइए प्लीज। और कई बार जब रिसिपिएंट्स ये इंतजार किस बात का होता है, मैं तो अगर ये पता होता था कि मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है तो मैं पहले ही कुर्सी से उठ चुका होता था आधा। लेकिन बहरहाल कई लोग ये सब्र रखते हैं, कई लोग थोड़े अपने कदमों को खींच कर चलते हैं, नहीं तो कई बार ये भी लगने लगता है इनको पहले से पता कैसे था कि ये होने वाला है। बहरहाल अब अगली अवार्ड कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का अवार्ड आपने नाम किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आज आईआईटी बॉम्बे को दुनिया भर में इंजीनियरिंग एजुकेशन और रिसर्च के मामले में अव्वल दर्जा दिया जाता है। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स को पद्म अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड के लिए आईआईटी बॉम्बे को बहुत सारी बधाई। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब अपने नाम इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड बोट ने भी किया है। ये कंपनी इस वक्त भारत की टॉप ऑडियो और वेयरेबल ब्रांड है। कंपनी स्मार्ट वॉच, वायरलेस स्पीकर्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स और स्टीरियोस के साथ साथ ईयरबड्स और साथ ही इन सब के अलावा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हालांकि कंपनी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए ही कस्टमर्स के बीच सबसे ज्यादा फेमस भी है। और फिलहाल आपको बता दें कि ये खास कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन तमाम अवार्ड्स। तो बोट्स कौन है जिसने शायद इस बोट की सवारी नहीं की होगी, इस नाव में नहीं बैठा होगा? मैं चाहूंगा बोट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्लीज यहां आए और इस अवार्ड को ग्रहण करें। ये कागज की कश्ती और बारिश का पानी नहीं है, ये वो कश्ती है जो न जाने कितने सारे गैजेट फ्रीक्स को उनके ऑप्शंस दे रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। और अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे मेहमानों का, अतिथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतने पेशेंस के साथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स का हौसला बढ़ाया और उनको ये इन इनामों से नवाजा। आपका बहुत धन्यवाद सर। अपनी जगह आप ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। Should we move ahead, Dinesh? Yeah. Okay. So, digital transformation देश की तरक्की की राह तैयार कर रहा है। भानु प्रताप जी बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहां आए, आपने अपना कीमती वक्त हम सबके साथ साझा किया। आपका बेहद शुक्रिया। एमएसएमई सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से और ज्यादा इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मैं यही विशेष मंत्री महोदय के सामने रख सकता हूं और इसको लेकर मैं यही कह सकता हूं आमीन। आप सबके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात बहुत सारी होती है, लेकिन कई बार उसके बावजूद हम कई तरह की हर्डल्स फेस करते हैं और उद्यमियों से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो किस किस तरह की परेशानियां होती हैं। आने वाले दिनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये फ्रेज सही मायनों में जमीन पर उतरे, इसी कामना के साथ आइए इस अवार्ड सेरेमनी में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, देश की तरक्की की राह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से तैयार हो रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इनोवेटिव आइडियाज अपनाकर एसएमईज सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और कस्टमाइजेशन को बेहतर ढंग से समझकर अपने गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन कैसे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाता है, कैसे पावर हाउस बनने की तरफ आगे ले जाता है, इसी पर हम खास बातचीत करेंगे इस सेशन में। और इसके लिए मैं यहां बुलाने वाला हूं खास लोगों को। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हम सेशन के मॉडरेटर, टीवी 9 कन्नड़ा के मैनेजिंग एडिटर आर श्रीधरन जी को,
और इस सेशन में हमारे खास मेहमान होंगे सुचेता एन शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलस इंटीग्रेटेड फाइनेंस लिमिटेड, और राजीव सिंह, वाइस प्रेसिडेंट मिड मार्केट एंड इमर्जिंग बिजनेस एसएपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा नॉलेज पार्टनर कार्नी के राहुल मिश्रा जी भी को भी मैं यहां आमंत्रित करता हूं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है और कितनी ट्रांसफॉर्म हुई है इससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री और हमारे एंटरप्रेन्योर्स की राह इससे कितनी आसान बनी है। क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए कितना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चारों तरफ है, पूरा इकोसिस्टम क्या ये महसूस कर रहा है कि सब चीजें जहां होनी चाहिए वैसी हैं, या कहीं पर कुछ परेशानियां, कुछ पेच भी हैं। आइए इस बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ऑल योर सर। So thank you so much, Dinesh and Surbhi. I must say that wherever this wonderful pair of hosts get to any event, they fill the room with energy, amazing energy. God bless you both. Thank you. So it's my pleasure to be moderating this panel, which really is about how SMEs can use digital technology to transform themselves and become the pioneers of the new India, the 2047 mission that we have as a country. How do we get there? So I'm going to be switching between Hindi and English a little bit. So I hope you'll bear with me. I'll start off with Rajiv, you first, because as SAP, you work with a lot of SMEs and you're actually helping them do their digital transformation. The first question is, which comes to mind, which I'm sure a lot of people here would also probably would be wondering. Transformation sounds like a big, scary word. If I'm an SME, I'm a proprietor-driven company. What do I even make of it? I mean, am I going to start comparing myself with a large company now, the way they transform themselves? Or is it incremental implementation of digital technology, which helps me get to a destination over a period of time? So how do you even convince, or what is the pitch when you talk about digital transformation? Rajiv. Yeah, thank you, Shridan. So whenever we've talked to these promoters in SMEs, and usually we would be talking to the promoters in our segment, what we have heard them talk about is some of the promoters would just ask about, I'm going to invest this much of money, what's my return on investment, right? What I am witnessing over past 2-3 years is that if you're able to really understand what do they want to achieve, if their vision is, they're able to state their vision, and most of the promoters can, you can really help them in digital transformation. Typically, in my understanding, I hate to use digital transformation when I'm talking to them. It's about how do you translate their vision into reality. And that's what, to me, a transformation really means. And in my discussions with most of the promoters, while it varies industry to industry, it just boils down to 3 broad areas, right? One, how do they really reach global markets, right? Second, how do they operate, uninterruptedly, their whole operation, supply chain, their in-house plants. And third, how do they give seamless experience to their internal team or customers and suppliers, right? So these are broad 3 themes which have emerged. Of course, the priorities vary industry to industry, but if we are able to translate these into reality, I think that's what transformation for us, that's how we define transformation for our customers. Great. So I think that's a pretty convincing kind of a logic to sell to SMEs. Let me come to you, Rahul. As Kearney, obviously you are working across sectors and across sizes of companies, big and small, from the largest to probably even a medium-sized company. When pre-COVID, I think we can define
the world we exist in as pre-COVID and post-COVID. So pre-COVID, there was a lot of enthusiasm among SMEs and medium-sized companies to embark on some sort of a digital transformation. What has happened post-COVID? Has the enthusiasm ebbed a little bit, or has it come back even stronger? What are you seeing on the ground? First of all, a very good afternoon to everyone, to my fellow panelists, and congratulations to all the winners, very well deserved today. And thank you for having me here. To your question, Shridharan, you're right. There was a lot of hype on the overall digital transformation journey before COVID. And I'm not sure if there's a bit of distortion you're getting on. That's okay, that's working. Just hold it closer to your mouth. Okay. Yeah. Hold it closer to your mouth. Yeah. Just before COVID, people had started thinking about investing in digital. And the idea was to take this as a concerted effort, right? We did a fairly comprehensive exercise defining the digital transformation roadmap for one of the industries. Mm-hmm. When COVID happened, the focus shifted on some of the more existential issues of the business. Now, as businesses have stabilized, volumes have picked up across sectors as momentum has come back and people are back to work, the focus is now again on where will the next wave of growth come and where should my next investment dollar go. Digital clearly is coming back as a focus area. However, the priority right now is not to do a big bang approach, but to take small, gradual, sprinted approach. Invest, learn, demonstrate success, fail whenever you do, learn from it, and then improve and drive the next wave. The focus is a lot on driving outcomes to the point that we heard around converting vision. So it is about converting vision to impact and outcome, and digital is being seen as the means over there, as the medium to drive that outcome. So a lot of focus on driving greater ROI, adding speed and agility, and as we see the years now and even the years going ahead, digital will continue to be a central topic in C-suite and boardroom discussions as well. Right. So Sucheta, you work with a lot of FICCI members, particularly FICCI Fino. Are you seeing the same enthusiasm that the two of my other panelists have and they've shared with us? Do you think SMEs are embracing digitization with as much vigor as they ought to? There is, so first of all, congratulations to the members and hello to the fellow panelists. I would see that there is a lot of digitization tools available. Government has come with a lot of schemes like the TREADS or the GEM. So members do want to take it, SMEs do want to accept it. At times, there are some very good schemes. It's just that there is more awareness and more, in fact, software is required to create it for them to accept it. So there is an acceptance, a lot of schemes, a lot of, I can say that with the digital commerce also, the marketing, the fintech companies. So it is, and they are accepting it. They have been taking it for credit. They've been taking it. It's just that it's at a slower pace. And it needs to be hastened up by creating more awareness, by making them able and ability. Say, I mean, I'm just giving a small example that this new GST thing that you will need even for 5 crore. Right. So for that, you need again a software. So the software, so that there should not be a time lag between that. That is where they are willing to, MSMEs are willing to take up growth, especially the young ones, they are willing to take up all of the digital transformations. They just need that extra help so that it's done faster. Right. So, Rajiv, one of the harsh realities of being a medium-sized company is that you're perpetually strapped for cash. There's a perpetual shortage of funding, no matter what we say in terms of what's happening in the broader VC or the sexier venture industry. The reality for most SMEs is that they are scrambling to raise money to keep themselves growing and grow. So in such a situation, how do you
show the value proposition to them that the investment that they make in digital transformation is not just a sound financial investment, but something they need to actually survive. Maybe in 5 years, if they don't make the investment, they probably won't be around, and someone else who does is probably going to eat their breakfast, lunch, and dinner. Yeah, very, very deep question. But yeah, very, very real, right? What you just said. Cash is always a problem. How we approach and what I have seen is that the minute MSME or a small medium enterprise starts seeing digital transformation as an investment from their profit, that okay, it'll eat into my profit, that's where they're doing the wrong thing first. So for us, it is like even if you are making 2% profit today, or you are just about profitable, even at times loss-making, this is an investment for you to be quickly compete against the larger players who are very competent digitally. The only way you can operate in the same space or go global in the shortest possible time today is possible with digital transformation. The larger organizations had muscle power of money to build distribution systems, go abroad, had the best talent. Today, MSMEs with digital transformation possibly can be at the same pedestal and compete with the largest of the largest with some of these digital tools, Shridan. So that's how we try to engage, work on return on investment. For example, how can you save cost or increase revenue? These are the two only factors which matter to a promoter, right? So we typically work with both these aspects, the revenue side, which is the customer side of it, and second is the costing, which is the operation, the supply chain, how you can make it more efficient and save costs. So these are typically two conversations which help us really set the vision right for these SMEs. Model which consulting industry uses quite often, which is that you save money and then you take a percentage of it. So is SAP also offering SMEs some sort of innovative ways to manage the investment? Yeah, so traditionally we used to be like, you have to pay everything upfront. Now, of course, with the cloud adoption, our entire offering is that you have flexibility in payment. And it's all cloud. So we have become more amenable to the requirements of SMEs. Yes, so yeah, we are also agile as we propose ourselves to be. That's a good thing too. Yeah, so Rahul, one of the things that you do as a consultant is basically advise companies on their strategy, and especially a digital strategy and growth strategy. What is an optimal roadmap that a medium-sized or a small company should adopt when it comes to digital transformation? What are the stacks that they should perhaps first look at before they go on to the more complex parts of the business and organization? So it all starts with an understanding of where the organization is currently, which is where my capabilities are, what gives us the right to play and the right to win in the market. Having understood that, where do we want to really excel? You can't be a rock star in all dimensions of the business. You need to strategically decide, is it market? Is it on the product side? Is it on the customer experience? Is it just on operational and supply chain flexibility and operating a very lean operations, low inventory levels and things like that? What are my top 2 or 3 priorities? And then really deciding what is the shortest and the fastest path to realize those outcomes. So if it is about inventory and I need end-to-end traceability and transparency across my supply chain, do my current technology platforms enable that, or do I need to first prioritize my investments so that I start getting visibility? A lot of these journeys first start by saying that, look, I don't have the data. So in many cases, and especially legacy organizations who've been traversing this journey from traditional IT to now thinking about digital, it's about, do we have the right data, and is there one version of truth in terms of that data? And then it is about how do we make sense of that data and use it to take on time, smarter, right business decisions to take this forward. So I would say it's starting point, what are my key strength areas, signature strengths, where do I want to prioritize, and then what should be a phased investment to do that. I don't think we are in a time where people are looking at big bang investments, invest and wait for 2 years and
hope to see success at the end of that 2 years. That kind of patience and time horizon and investments businesses are not keen to do. So, Suchita, I had a question for you. Companies like SAP are there to help you along, with your digital transformation, but the reality at the end of the day is that the people who need to use those technologies to actually realize the full potential of those technologies, especially in the SME kind of an environment, aren't probably the savviest. It can be a little formidable for them. So what has been your experience, and how would you recommend that SMEs deal with that training aspect? It's not a very complicated thing. It's probably a training issue that people need to be made aware, and you handhold them while they get through that process for the initial few months. How would you suggest that SMEs should deal with this issue of training their own people to work in a new digitized manner so that the company can really leverage the potential of technology? So ease of doing business also includes ease of operating the software. Because it is very difficult at times that they are not able to, for small, there are the MIS, the little information, the reports, because just for a small snack, they are not aware that where to go, and then they wait for the software providers to come. So maybe this has to be the liaison between the software provider and the company, that these are the reports we will be requiring. These are the, for whatever the administration purpose, for the growth purpose, for different. So maybe all that has to be included while installing the software, and at that time the training has to take place. And even at regular intervals, because people change, employees change. So that needs to, and with the growth, the new schemes coming up. So there is a snag at times which they are not able to take up. So that operating software, it has to become much easier. It's required. And not just training, hand-holding, but at availability. That, okay, at this point of time, very often, I have this and I have to submit it. So then at that point of time, if that availability is not there, somebody has to be there to answer. That's, I'm just putting it very simply, but that's there. So Rajiv, do you hear that often? So how do you solve that problem for your clients? So that's very, very interesting. It's very common, right? Especially after pandemic, right? The whole resource requirement has gone beyond control, right? So the costs of resources has gone skyrocketed, at least in digital transformation we are seeing in our world. So the scarcity of resource is a problem, right? So what we are doing, and I'm guessing most of the industry is also doing, is that what we are doing is that we have taken up this role. We have tied up with various regional associations, right? Trade associations. We have tied up with government of Orissa, government of Telangana, Andhra Pradesh, done MOUs where we are digitally skilling the workforce, right? So we are training students out from college and ensuring that the workforce is available for this kind of requirement. And our endeavor, while it is on SAP products, but it's beyond that. In other Code Unnati as a program that we run, we are digitally making 1 million digital literates, especially girl child. So what we are saying is that there is a funnel. These people who will be digitally literate, who are underprivileged, who are 13, 14, 15 today, they should be able to run the Excel sheets and the Word documents. And then as they graduate, they become first data entry operators, etc., and then graduate to larger. So digital literacy and skill availability is a big mission that we have taken up, Shidran. Yes. Rahul, you wanted to add a point, I think. I think with digital investment, it's become all the more important that it's not just a separate team which knows and understands digital, but the business in general becomes digitally savvy. Our legacy way of thinking in organizations has been that knowledge needs to flow from top to bottom. The supervisors will train their people. We've seen apprenticeship models. But when it comes to digital, increasingly what we have seen is there's been reverse coaching and training over there. To give you an example, this is from one of the Navratna companies. All of us, all organizations go through the challenge of managing bank guarantees. It is a physical document that needs to go around. The biggest question over there is trust between the bank and between the parties that need to manage bank guarantee. So when
2 or 3 years back when there was a question that, okay, if trust is an issue, can we do something about, can we use technology to enable this? And therefore, someone suggested, okay, let's do blockchain. Everyone had thought of blockchain in the context of cryptocurrencies, etc. But then this was a situation where someone who's just fresh out of college, 2-3 years out of college, who understands technology, coaching and training the chairman of a Navratna company and telling him what a blockchain and technology is and how it can be applied to the solving the problem of bank guarantees, etc. So a lot of different ways of learning and disseminating information has come up, and we need to just make sure that who is the best known in that area. Right. Okay. राजीव जी, अगर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि भारत एक विकसित देश बनना चाहिए 2047 तक, अगर हमने ये अचीव करना है तो इसके लिए हमारे छोटे और मध्यवर्ग की जो कंपनीज हैं, इनको 2 या 3 जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो क्या करना है? मेरे ख्याल से 3 चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, डिजिटलाइजेशन, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ही एक ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे कि ये जो एसएमईज़ हैं ये ग्लोबल स्तर पर compete कर सकती हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, जैसे 40% एक्सपोर्ट एसएमईज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खाली 1% ऑफ SMEs are actually exporting, only 1%. So 99% of SMEs can play a role in getting that global pie of business. Now, तो अगर हमें उस ग्लोबल पाई को लेना है तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको कस्टमर का रीच मिल जाता है ग्लोबल मार्केट्स का, आपको अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने सप्लायर से इंटरेक्ट करने को मिल जाता है। इसमें दूसरा, एंड मैं इसमें एग्जांपल भी दूंगा, बट दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो हम कहते हैं ग्लोबल बैरियर्स को तोड़ना, जो मैं एक्सपोर्ट वाली बात कर रहा था, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटलाइजेशन के बाद जो आप ग्लोबल बैरियर्स को तोड़ पाएंगे विद योर सप्लायर्स। टुडे हमारा एक एग्जांपल था जहाँ पे गुजरात की एक कंपनी को इंपोर्ट करना था कुछ सामान जो चाइना से आना था पैंडेमिक के टाइम में, एंड उनका एक कंपोनेंट, उनकी पूरी प्रोडक्शन उसके बेसिस पे डिपेंडेंट थी, और उन्हें ये नहीं पता था कि क्या ऑल्टरनेट सप्लायर आसपास अवेलेबल हैं कि नहीं है। सो उनको ये आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई टूल भी हो सकता है जो उन्हें बता सकता है कि उनके पास में एक ऑल्टरनेट सप्लायर है जो सिमिलर कंपोनेंट बनाता है। और जब हमने, हमारा एक टूल है सप्लायर नेटवर्क, जो हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन किया पैंडेमिक में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि उनसे करीब 150 किलोमीटर दूर वो पूरा सप्लायर है जो वो चाइना से उसका वेट कर रहे थे। सो दिस डिजिटलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड टू टेक यू ग्लोबल these interventions are important. Third, as I said, skilling. ये 3 चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हमारी SMEs डेफिनेटली, जो छोटी SMEs हैं वो मिड साइज बन सकती हैं, और मिड साइज जो है वो बड़ी बन सकती हैं। तो राहुल, राजीव ने एक बहुत ही अहम बात कही है कि ये जो 3 चीज़ें करनी हैं, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आपने एक ग्लोबल मार्केट में सरवाइव करना है, खेलना है और उसमें प्रतिस्पर्धा से आपने जीतना है, तो ये आपको ऑप्शन नहीं है अब। तो ये मैसेज को कैसे आप कंपनीज को कन्विंस कर सकते हैं? पहली चीज़ तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट डिजिटल में हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, ये थियोरेटिकल या किताबी बात नहीं लगनी चाहिए। लीडरशिप से लेकर के शॉप फ्लोर पे जो एक कर्मचारी है, एक वर्कर है, उसे ये लगना चाहिए कि इससे मेरा काम कैसे बेहतर हो सकता है, इससे मेरे आए दिन के काम में क्या इस पे इम्पैक्ट होता है। उसी का जिस काम को करने में मुझे एक शिफ्ट लगता था, क्या उसे मैं आधे शिफ्ट में कर सकता हूँ। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या बेटर हो सकती है। जो हमारा मशीन मेंटेनेंस के लिए अगर 4 घंटे 8 घंटे बंद रहता था, क्या हम वो काम कम डाउन टाइम ले सकते हैं, कम मेंटेनेंस ले सकते हैं। सो हमारे हर दिन के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वाइज, पैसे के टर्म्स में क्या इम्पैक्ट होगा, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज ये सोचना कि डिजिटल किसी और का काम है, कोई और हमारे लिए कर देगा, मेरा काम तो मशीन चलाना है, ये नहीं है। आज के समय में डिजिटल और
उसका जो एक इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं एक साथ आना, कि हमारे पुराने जो काम करने के तरीके हैं वो और नई टेक्नोलॉजी का क्या क्या उनका ओवरलैप है, कैसे एक साथ आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस ने डिजिटल जर्नी या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा है, वहाँ ये काम कुछ 8-10 लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया है। ये जिसे कहते हैं छोटे छोटे कोर ग्रुप्स बनाना, टैग टीम्स बनाना, हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन में उसे पर्कुलेट कराना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक आदमी अपने अगल बगल देखे और सोचे कि ठीक है, ऐसा क्या है जो मैं और बेहतर कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, और जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है, मेरे आए दिन के काम में इम्पैक्ट हो सकता है। सुचेता जी, एक जो मुद्दा राजीव जी ने उठाया था वो स्किलिंग पे है। इस पे फिक्की जैसी संस्था और जो सरकार है, बोथ सेंटर पे और जो स्टेट पे सरकार है, वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आपके नज़र में सरकार या फिक्की जैसी संस्था को कैसे हेल्प करना चाहिए एसएमईज को? नहीं, बहुत, they say that we can work with them on the skilling centers and we do that also, that is not, but I would say कि digital transformation ज़रूरी है, but with a human touch. What has happened is अभी ये, in fact with the government there are 137 schemes for MSMEs, which is finance, marketing, skilling, technology, software. पर ऐसा भी है कि जब ये सर्वे करते हैं तो क्या आता है, these are all the impediments to the growth. So then where is the link? The link has to be there. It is just the awareness and that digital transformation. We are, of course, not just us, everybody is willing to work with the government on all the schemes. And skilling is, of course, the most important, because not only can they become entrepreneurial, but they can help in getting good jobs also. So it's both ways. But sirf ye nahi hai, there are so many other possibilities for that also. So that is, it is there, and there are centers being opened. We are helping people, so that is always there. Right. So I think that's an important point Sucheta made, Raji, which is like technology with a human component. So we have to convince people that technology is not going to displace people. It's not going to make them redundant or jobless. I think for a lot of people, that would be a genuine fear, a valid fear. How do you address that when you meet your clients and customers, potential customers? Yeah, I think those fears were pre-pandemic, I should say. Now people have realized, but this was definitely a fear, right? That it'll replace jobs at large scale, especially in the public sector departments. That's a big fear. In enterprise, but the fact, when you look at the macro, right, what we are seeing is that automation has not reduced jobs factually. And maybe Rahul will just help us with that. I will be asking him that. Yeah, but the whole automation, AI, ML, that all we're talking about, it was a big fear 3 years back that it'll reduce a lot of jobs, the robotics, etc. But actually, it has not impacted jobs at all. The jobs have been created in other areas, right? So the whole automation, the software has started booming up. So on the whole, the job scenario has not gone down. But coming to the point, for an enterprise, for an SME, is it an important topic? Of course, for them, it's about cost, right? First, if they can repurpose that same person for a better job, higher yield from the same workforce, I think that is much better for them. So this digitalization is actually helping them to repurpose that headcount to a better return. So I think that's been handled to a large extent, Shridan. Right. So Rahul, companies usually get in consultants when they don't want to do the difficult job themselves. So what has been your experience in terms of automation? Does it actually lead to job losses, or like Rajiv said, you're actually able to repurpose some of your people to do even more value-added activities, higher skill activities? I agree with what Rajiv is saying, that the apprehension that automation will lead to job losses, I think to a large extent is misplaced, I'd say. It does lead to a change in the mix of job and the skills that are needed. There are some skills that will become redundant. Simple example, there are plants that we worked with, manufacturing setup, where
purely for the warehousing and the loading unloading operation. When the truck would come, someone would make a register entry. From register, someone would punch. There'd be one person who would punch in from register to Excel. Someone would take that Excel, upload it in SAP, because the organization has invested in SAP on all of that. Now with technology, the ability to put barcodes, scans, and all of that, a lot of those things become, that register entry and Excel entry becomes redundant, right? Technology enables that. But at the same time, because the organization has invested in newer technology, new solutions, it is the same set of people who understand warehousing operations. They are expected to say that, hey, look, now if we are using a barcode solution, if we have RFID-based solution, you understand how our warehouses operate, and now that we've got the technology, what is the best way? So can you learn, can you apply it in your context and just make sure and demonstrate that? So it's placed an ask on people to upskill themselves. The investments have placed a requirement for newer skills to be developed over, and therefore we need that skill from the ecosystem and the partners that we work with, and even within the organization, right? So I guess it changes the mix, but not really leads to attrition. Right. Sucheta, you want to add a point? Yeah, no, I was just saying that one most important thing we forget is that we save time. And administration is much, much easier with digital transformation. So what happens is actually they can contribute to the growth of the company and think more towards expansion and growth rather than spend more time on administration and so that is also one of the major factors when it comes to digital transformation. Right. So, you know, I would like to give one example which will probably drive home the multiplier effect of technology, the way it did in the financial service industry, which is like when earlier the mindset was if it's a privately held company, the promoter would, you know, take some money out of the company, you know, it was a reality of life. But once they understood that they can actually, if you're a public listed company, that I can get a better multiplier on the PE of my stock, if the money stayed within the company, it could give me 10 times of, you know, 15 times of that profit. 1 rupee becomes 15 in market value. Once they understood that, I think there was a dramatic change in how promoters then manage their company. So similarly, with technology, if companies are able to understand that even simple things like compliance, if an investor comes and is readily able to look at all your digital documents and see that your governance and your compliance is up to speed, I think they're going to be far more confident of putting money in you. Your process of raising funds is going to become so much shorter. It's going to be easier for you. So I think once promoters see that point, they would be happy to, I think, invest the money they want in digital transformation, especially with SAP. I think we have another 5 minutes, I guess. So I really want to open up the floor to some questions from the audience, because this is, the whole panel is for them, their benefit. So if there's anyone passing, mics around. So I would request you to state your name, your company, and then if there's any individual panelists that you want to answer your question. Can someone give him a mic, please? Yeah. My name is Alok Anand from Acumen Aviation, Bangalore. Actually, my question is a bit, see, when we talk digital transformation, part of it is to shift from a legacy software to new tech software also. Because it's not about just digitization. A lot of companies, legacy companies, are using old software, right? Which you want to upgrade. So my question is, and it's for general panel, anyone please can kindly answer it. What is the biggest impediment do you face when you advise a customer to move from legacy to new age tech? Because the techs are very different now. The world has moved on, and like for us, when we do that, we find that as a challenge. So I want to know what you do to overcome that, and what do you think can actually incentivize the company and moreover the employees to move on from legacy tech to new age tech? That's a good question. Rajiv, you want to take that? And maybe Rahul, you can just add a quick bit. Yeah. I think Rahul can add as well. So this is a very classic problem for what we call it as the problem of change management, right? Which is the inertia from having a system which is running for you and doing
80% of the job to a decision where maybe you can reach 150%, but then you have to take that step of changing, right? It's a very classical problem faced by most of the organizations who are on their growth path. See, for us, our experience is the way to tackle this is it has to be the vision, as I said, vision has to come from top down. If the topmost team, the board, is sold on that vision of transformation and change, everybody aligns. And that's been our experience from a digital transformation point of view. It can never be bottoms up. And that's what Rahul sometime back was also talking about. Right? So we try to basically set this or tell this vision to the topmost promoter or the board members, CFOs, promoters. And then if they are bought onto that idea that this is what benefit that they will get, then everything just, it's then their job is to really plan, strategize, execute on what should be my training, change management schedules, what should be my, periodic interventions with flyers, with mailers, etc. And that's a whole strategy around it, right? Yeah, that's my two bit cents on it. Right, Rahul, 30 seconds because I have to wrap up the panel now. So I guess the challenges are broadly in two buckets, and I'll say there's some of them are very tactical, right? As you transition data, your quality of traditional data, the discipline that you may or may not have had traditionally over there, the transition to, because it's a running ship, how do you switch over, jump from one software to another? All of those are tactical issues. I guess people end up being the biggest challenge over there, just the inertia on this. Organizations, the first thing on digital transformation they do is create a dashboard or an MIS, right? But how often is the management conducting business reviews using that dashboard? The moment leadership starts doing that, everyone will start taking that dashboard seriously. So that bit of top management and change management is needed. It's a human factor. It takes a while to change. Great. Thank you, Rajiv and Rahul. I'm afraid with that, I have to wrap up this panel, but the good news is Rajiv, Sucheta and Rahul are all going to be around. Please feel free to walk up to them and ask whatever questions you want, and they'd be very happy to chat with you and answer your questions. With that, let's have a round of applause for our panelists. I think they've done a great job. Thank you. Thank you. Very enlightening and instructional indeed. वो लोग जो इस पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं और कई क्वेरीज ऐसी जो थ्योरेटिकली कई सवालों में और जवाबों में लोग ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं वो सुनते हैं आप और आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन आपको करना क्या है उस समय जब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस हों. तो ये कमाल का सेशन अभी हमने देखा और अब हम जिस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं वो और भी ज्यादा खास है. बिल्कुल खास है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दिनेश जी ये जरूर कहना चाहूंगी कि appreciations can make a day and even change a life. So I would like to actually appreciate Sridharan ji for the wonderful session, because you know your willingness to put things into words is something really important which we really need to understand. So round of applause for everyone and thank you so much for your presence. And as Dinesh you said, the next set of awards are going to be announced. और अगर before that, yeah. जी, और अभी आपने क्योंकि श्रीधरन जी का धन्यवाद किया, उन्होंने इनफैक्ट हम लोगों की हौसला अफजाई भी की थी. अभी मुझको यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन साथ में सुचिता जी का, राजीव जी का और राहुल जी का बहुत धन्यवाद. That's why I said, you know, there's a willingness where people like them who have a wide, large experience, and when they come on the stage to share their experience through these words, it matters a lot. So round of applause again. Okay, तो हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद है उदय सामंत, Minister of Industries, Government of Maharashtra. Round of applause, please. हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस खास शो में सर. और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एडिटर कन्वर्जेंस दीप उपाध्याय को. Welcome to you, Deep, as well. Please be here with us. Join us on stage. महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर आपके सामने मंच पर मौजूद हैं और TV9 भारतवर्ष, TV9 ग्रुप के एडिटर कन्वर्जेंस यहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं. हम सब की तरफ से मिनिस्टर महोदय को ये बुके उनकी तरफ से दिया जा रहा है. बहुत स्वागत है सर आपका. Exactly. और महाराष्ट्र को देखिए हमेशा से ही इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर भी अब जाना जाता है. इंडस्ट्रियल स्टेट की जहां तक मैं बात कर रही हूं, ऐसे में मिड मार्केट को लेकर अब राज्य सरकार किस तरीके से इनिशिएटिव्स ले रही है,
मंच पर हमारे साथ खास मेहमान हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और खास बातचीत अब उदय सामंत के साथ करने वाले हैं। इस सेशन को मॉडरेट करने वाले हैं दिनेश गौतम, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर टीवी 9 भारतवर्ष। ओवर टू यू दिनेश। दीप सर, बहुत धन्यवाद स्टेज पर आने के लिए। अपनी जगह लें और आप नीचे जाएं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। उपचेक, अभी आपने मंत्री महोदय का स्वागत किया। ओवरऑल आपको इकोसिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है एसएमई सेक्टर का, और कितना कितना प्रॉमिसिंग आने वाले दिनों में देखते हैं आप इसको? हम तो महाराष्ट्र में आए हैं, महाराष्ट्र जमीन है उद्योगों की, उद्योग यहीं से आगे बढ़े हैं, और यहाँ पर लोगों को देख के लग रहा है कि एमएसएमई जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र इनके लिए एक बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड आगे बनने वाली है। महाराष्ट्र, द मैग्नेटिक महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र जो अपने आप में एक चुंबक की तरह काम करता है निवेश को आकर्षित करने के लिहाज से और इस पूरे इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिहाज से। आप जानते हैं देश की राजनीतिक राजधानी अगर दिल्ली है तो आर्थिक राजधानी मुंबई को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रोथ का इंजन है, ग्रोथ के लिए पावर हाउस है। अब मैं जरा एक और माइक आमंत्रित करना चाहता हूं प्लीज मंत्री महोदय के लिए, और उसके बाद उनसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या क्या खास विजन है उनका इस पूरे सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। कौन सी वो बातें हैं जिनको खास तौर से आइडेंटिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, और तब जबकि अब पूरी दुनिया में इस बात की होड़ है कि कौन किससे आगे निकलता है। इस दुनिया में हमारी पहचान ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर है। हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है, हमारी वो विशिष्ट पहचान तो है, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम अपनी पहचान को और मजबूत नहीं करते तब तक गुंजाइश है। इस गुंजाइश को कैसे पूरा किया जाएगा? मैग्नेटिक महाराष्ट्र और उसके इंडस्ट्री मिनिस्टर, बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव एसएपी ने और टीवी 9 भारतवर्ष ने लिया है उद्यमियों को पहचानने का, उनके काम को सराहने का, सर आंखों पर लेने का और उसको खिताब से नवाजने का, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर को अपने मन में जो बात है वो कहने के लिए दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक तो महाराष्ट्र, आपने बताया कि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने वाला एक बहुत बड़ा स्टेट है, और अभी जो कोई बात चल रही है, राजनीति चल रही है, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र का एक पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, वो बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कल भी हम दिल्ली में थे। दिल्ली में एक इंटरनेशनल जो व्यापार मेला था उसमें मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर करके गया था, और एक ही हमारी इच्छा है, एक ही हमारा ध्यान उसके ऊपर है कि इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र में आना चाहिए। वो जो आईटी इंडस्ट्री रहे या ऑटोमोबाइल सेक्टर की रहे, या अभी तो हाइड्रोजन पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हमने आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन इनके सबका एक ही जो अट्रैक्शन रहता है कि जिस स्टेट में हम जाते हैं वहाँ हमको रेड कारपेट कैसे मिलने वाला है। तो इस माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि जो पहले होता था कि अदर स्टेट की पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी क्या है, वो हम टेबल पे रखते थे और हम बताते थे कि इसके आगे जाके हम कुछ देने वाले हैं। तो हमने थोड़ा अभी इसमें चेंज किया है कि जो अदर स्टेट देने वाला है उससे ज़्यादा हम देंगे, और ये श्योरिटी हम इंडस्ट्री वाले को दे रहे हैं। और इसके लिए जो रेड कारपेट का कहना है कि रेड कारपेट कैसा चाहिए, उनका इंसेंटिव कैसा चाहिए, वाटर में उनको क्या कंसेशन चाहिए, लैंड में क्या कंसेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेशन चाहिए, ये सब देने के लिए महाराष्ट्र तैयार है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सब उद्योजकों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को महाराष्ट्र में आने का निमंत्रण देता हूँ। जो कुछ आपको महाराष्ट्र में चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, जो कुछ बेनिफिट्स चाहिए आपको, हम महाराष्ट्र स्टेट देने वाला है। इसलिए इस कार्यक्रम से हम पहले निमंत्रण देते हैं, और जो कुछ आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। और आप क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, एक बात मैं ज़रूर समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र हमेशा से जाना गया है इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पर होने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देने वाला एक स्टेट। तो इसकी पहचान आने वाले दिनों में मिनिस्टर महोदय कैसे देखते हैं? इंडस्ट्रीज के लिए पहचान के मामले में ये अब आगे सास भी कभी बहू थी के तौर पर जाना जाएगा, या जाना जाएगा नया 9 दिन पुराना 100 दिन? हर एक स्टेट अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट खींचना चाहता है और महाराष्ट्र सबसे आगे दौड़ता रहा है।
आने वाला वक्त महाराष्ट्र के हिसाब से आप कैसा देखते हैं? इसीलिए मैंने अभी बात की कि जो जो कुछ इंडस्ट्री को चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। अभी देखो, हम एक 10-15 दिन पहले हमने एक यूएसए के जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे उनसे हमने बात की। उन्होंने हमको कहा कि देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में हाइड्रोजन पॉलिसी डिफाइन हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है, देश के अदर स्टेट में नहीं है। तो हमने डायरेक्टली उसी दिन डिक्लेयर कर दिया कि हम भी हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हाइड्रोजन स्कूटर रहेंगे, हाइड्रोजन बसेस रहेंगे, हाइड्रोजन ट्रक्स रहेंगे, हाइड्रोजन के बोट रहेंगे। ये सब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ महाराष्ट्र में होगा और इसके लिए जो जो कुछ देना चाहिए हम देंगे। ये कमिटमेंट जो हम करते हैं वो सही होना चाहिए, वो कमिटमेंट उनके पास जाना चाहिए और बाद में ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको पता चला कि कौन सा स्टेट क्या देने वाला है। तो मैं ये आपकी तरफ से ये मंच पे कहना चाहता हूँ कि अदर स्टेट क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो कुछ वो देने वाले हैं उससे बढ़िया महाराष्ट्र देगा, ये हमारी कमिटमेंट है। ये उम्मीद इसलिए भी की जाती है क्योंकि जब डबल इंजन की बात की जाती है और ग्रोथ इंजन की बात की जाती है तो एसएमईज के लिए अगर ये ग्रोथ इंजन महाराष्ट्र रहा है तो अब डबल इंजन वाला एडवांटेज आपके साथ है, तो अब आपसे और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बात को भी आप समझते होंगे। नहीं, अभी ऐसा कहा जाता था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑटो रिक्शा का भी है, डबल इंजन का भी है, अभी तो डबल इंजन का है, पहले ऑटो रिक्शा का था। ऐसा सब चल रहा है, लेकिन ये डबल इंजन का फायदा ये महाराष्ट्र स्टेट और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, अगर ये एक साथ रहेंगी ना तो अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी यहाँ आने से पहले मैं कॉस्मोस इंडस्ट्री जो है उनके साथ हमने एक मीटिंग ली थी। उन्होंने हमको ये बात हमारे ध्यान में उन्होंने लाके दी कि हम एक मीटिंग चाहते थे, वो 1 बरस नहीं हुई। मैंने अभी पिछले संवाद में सुना कि जो कुछ करना है वो जल्द करना चाहिए, टाइम बाउंड करना चाहिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास आता है वो ऐसा नहीं है कि उसको दूसरी जगह कहाँ जाना नहीं है इसलिए वहाँ आता है, उसको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अच्छी लैंड मिलेगी, अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा, अच्छा बर्ताव उनके साथ होगा, उनका जो कुछ इंसेंटिव का जो मीटिंग्स रहता है वो 3 महीने के बाद रहते हैं, 6 महीने के बाद रहते हैं, वो जल्द से जल्द होगा। एक थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हमारी हो गई उसमें मेरे को पता ऐसा चला कि 1-1, 1.5 बरस अगर हम कैबिनेट सब कमेटी का मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्री वालों को कैसा बेनिफिट देंगे। तो मैंने सुना यहाँ जब आने के बाद कि जो कुछ करना है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ने वो जल्द करना चाहिए। मेरा तो कहना ऐसा है कि हमारे पास एक मैत्री करके हमने एक जो वन विंडो सिस्टम हम बोलते हैं वो कैसा करना चाहिए हमने एक आइडेंटिफाई किया है, लेकिन उसमें भी अगर 1 बरस 1.5 बरस लग रहा है तो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री आने वाली है वो स्टेट में नहीं आएगी। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कहना है कि जल्द से जल्द उनको परमिशन मिलनी चाहिए और वन विंडो सिस्टम चाहिए, यही हम करने वाले हैं और ये मेरे ख्याल से जल्द हम करेंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं उनको जो परमिशन चाहिए वो जल्द से जल्द हम देंगे। एक बात बड़ी धरातल वाली बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स अपने आप में एक बड़ा एंगेजिंग मामला है, उसके साथ अब आपको राजकाज चलाना है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखना है, ब्यूरोक्रेसी का अपना एक सेट पैटर्न होता है चीज़ों को देखने का। और कई बार तो आप ही लोगों से मैंने सुना है, तमाम नेता ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ये समझती है जो हमको मालूम है वो बस गॉस्पेल ट्रुथ है और उसके अलावा कुछ और समझने सुनने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये जो क्विक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ों में बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की और आगे क्या करना है ये सोचने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इसमें इंडस्ट्री का फीडबैक आपको मिलता रहे और बहुत जल्दी आप उसको पॉलिसी में कहाँ क्या अकोमोडेट करना है उस तरीके से आप सुविधाएं दे पाएं। ये जो टाइम बाउंड देने की बात आप कर रहे हैं, ये कहने में आसान है लेकिन करने में भी आसान है या मुश्किल है? नहीं, करने में भी बहुत आसान है। आज सुबह एक हमारा जो एक चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला है, अभी ऐसा है कि स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ आनी चाहिए। तो पॉलिटिकल स्पीच में हम कहते हैं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी रत्नागिरी में है, रत्नागिरी में मैं स्टील प्रोजेक्ट लाऊंगा, ये ठीक है, ये राजनीति के लिए अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री है वो अगर गढ़चिरौली में आ जाए और चंद्रपुर में आ जाए तो उनका जो रॉ मटेरियल है वहीं से वहाँ मिल सकता है। तो 2-4 दिन पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आए थे कि हमको 500 एकड़ जमीन चाहिए।
तो उन्होंने मजाक से मेरे को पूछा कितना दिन लगेगा, 500 दिन लगेगा, 2 बरस लगेगा, 1 बरस लगेगा। तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उनको परसों हमने बोला कि आप अर्जी कर दो, आज सुबह हमने मीटिंग ली और 500 एकड़ जगह स्टील इंडस्ट्री के लिए चंद्रपुर में उनको दे दी। मेरे ख्याल से इतना स्पीड अगर रहेगा तो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो सेटिस्फाई रहेंगे, उनको जो जो चाहिए वो हम जल्द दे सके, तो उनका भी जो कोई टाइम टेबल रहता है वो भी अचीव हो सकता है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसा हम एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। जो 500 करोड़ की रहे, 50 करोड़ की रहे, 50,000 करोड़ की रहे, सबको अगर एक पाइपलाइन में हम जल्द से जल्द कर सके तो उनको फायदा होगा। तो उदय जी की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में ये जो डिपार्टमेंट है ये और ज़्यादा उदय के नए होराइजन्स पर पहुंचे और नए प्रतिमानों को स्थापित करे। इंडस्ट्रीज के मामले में उदय जी की अगुवाई में वैसा काम हो जो नज़ीर बने, ये उम्मीद हम करते हैं उदय जी, और ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। लेकिन अभी आपको हमारे उद्यमियों को अपने हाथों से पुरस्कार देने, अवार्ड देने और उनका हौसला बढ़ाना है। तो आइए अब उस तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सामंत जी। अभी आपने सुना उदय जी को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र, जिसको हमेशा से एक उदाहरण माना गया है कि निवेश को कैसे आकर्षित करना है, इंडस्ट्री को कैसे, और मैं तब तक ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ यहाँ पर इस जगह को क्लियर करें ताकि हमारे उद्यमी आएँ और उनको पुरस्कृत किया जा सके। तो इसको महाराष्ट्र को वो नज़ीर कैसे बनाए रखना है आने वाले दिनों में, बाकी स्टेट्स के लिए कैसे वो रोल मॉडल बना रहे, और अब प्रतिस्पर्धा है, होड़ है, हर जगह कट थ्रोट है, तो उसमें कैसे बने रहना है और सामने महाराष्ट्र को बनाए रखना है। उदय जी ने अभी इस बारे में प्रकाश डाला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस खास बातचीत के लिए आपका भी। और इस बीच अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं आज के हमारे सेकंड सेट ऑफ अवार्ड्स को, और इस सेट में हमने सोशल इम्पैक्ट चैंपियन ऑफ द ईयर और बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कंपनीज को चुना है। और इस अवार्ड कैटेगरीज में वो कंपनीज शामिल हैं जो ह्यूमन वैल्यूज और खासकर एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस मॉडल को तैयार कर बाकी कंपनीज के लिए भी अब कैसे इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल बहादी, सीईओ एसएपी इंडिया, और दीप उपाध्याय, एक बार फिर से मैं आपसे चाहूंगी कि आप मंच पर हमें ज्वाइन करें। टीवी9 नेटवर्क से एडिटर कन्वर्जेंस के दीप उपाध्याय, आप प्लीज एक बार फिर से मंच पर जरूर आएं। और सेकंड सेट ऑफ अवार्ड्स की सेरेमनी के लिए उदय सामंत जी मंच पर हमारे साथ ही हैं। दीप, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज आप हमें मंच पर ज्वाइन करें। दीप सर हैं क्या यहाँ पे? ओके, दीप जी टीवी9 ग्रुप के एडिटर कॉन्वर्जेंस, और आपके लिए, कई लोगों के लिए बड़ा नया शब्द होगा। हाँ। एडिटर कॉन्वर्जेंस क्या होते हैं? एडिटर कॉन्वर्जेंस वो होते हैं जो आज डिजिटल, क्योंकि हम यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल में मीडिया का जो इकोसिस्टम है और टेलीविजन अभी तक जिस तरीके से चला आता रहा है, उसका कॉन्वर्जेंस, वो दोनों नदियां आकर कहाँ आपस में मिलती हैं वो देखना और उसका ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करना लोगों की बेहतरी के लिए, ये उन एडिटर महोदय का काम होता है। लेकिन जब तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं तब तक क्या हम अवार्ड्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं सुरभि? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर साउथ का खिताब अपने नाम किया है मैकविन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। बता दें 2017 में ही बेंगलुरु में कंपनी की शुरुआत हुई। दीप, वी वर ईगरली वेटिंग फॉर यू एंड वी वांट यू टू जॉइन अस ऑन स्टेज फॉर दिस सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स। एंड फिलहाल कंपनी के बारे में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ईवी मोटर्स, सोलर वाटर पंप्स और कंट्रोलर्स के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एक पायनीर के तौर पर भी जानी जाती है। ये सेट ऑफ अवार्ड्स की जिस तरीके से हम ऐलान कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के बारे में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर साउथ का खिताब आपने देखा मैकविन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गया। और उसके बारे में मैं परिचय दे दूं कि 2017 में बेंगलुरु में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी ईवी मोटर, सोलर वाटर पंप्स और कंट्रोलर्स की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आज एक पायनियर के तौर पर जानी जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए सर। आप प्लीज कम इन द सेंटर। ताल बिगड़े, ताल बिगड़े। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर वेस्ट रीजन, उसका अवार्ड जीता है रूबमिन ने। कंपनी मेटल रिसाइकलिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स, मेटल
intermediates, mining, industrial gas production, mineral exploration और engineering services provide करती है. और बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर का ये खास अवार्ड दिया जा रहा है. राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. रूबामिन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका. अगले अवार्ड की बात करते हैं क्योंकि बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड अब जीता है चार्ज जोन ने. अपने कस्टमर्स को 100% इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल साथ ही रिलायबल अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस ये कंपनी देती है और कंपनी कस्टमर्स की टाइम वैल्यू को भी बखूबी समझती भी है. आपको ये खिताब बहुत मुबारक. और आइए अब अगले अवार्ड को अनाउंस करते हैं हम. बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर साउथ का खिताब अपने नाम किया है MB फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड ने. कंपनी अपने इंसेप्शन के समय से इनोवेटिव सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है. इंडिया, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में सब्सटेंशियल मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन चुकी है. कर्नाटका में एस्टेब्लिश्ड कई प्रोडक्शन यूनिट्स की मदद से ये इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. Congratulations. अब बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी ऑफ द ईयर ईस्ट का अवार्ड जीता है विक्रम सोलर. वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए ये कंपनी रिलायबल सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है और आधुनिक सोच के जरिए ही कंपनी लोगों के बीच क्लाइमेट चेंज और सोलर इंडस्ट्री को लेकर जागरूकता भी बढ़ा रही है. कंपनी ऑफ द ईयर CPG एंड रिटेल का अवार्ड अब अनाउंस करते हैं. यह अवार्ड जीता है ग्लोबल स्टोर्स ने. कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब अपने नाम किया है इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड ने. ये एक बार फिर से मैं घोषित कर दूं, बोर्ड के संदर्भ में आपने सुना कि यह कंपनी इस वक्त भारत के टॉप ऑडियो और वेयरेबल ब्रांड्स में से एक है. एक बार फिर से यहाँ रिकैप दे दें किस तरीके से स्मार्ट इनिशिएटिव के जरिए ही ये कंपनी स्मार्ट वॉच, वायरलेस स्पीकर, ईयरफोन, हेडफोन, साथ ही स्टीरियोज के साथ साथ ईयरबड्स और इनके अलावा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो प्रोडक्ट्स भी बनाती है. कंपनी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए ही कस्टमर्स के बीच फेमस है. इस किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इसी के साथ मंत्री महोदय का मैं बेहद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त हमारे साथ साझा किया और हमारे उद्यमियों का हौसला बढ़ाया. बहुत धन्यवाद. बहुत खास है आज का ये मंच दिनेश और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है. इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जहां तक बात बिजनेस की आती है, बिजनेस बड़ा हो या छोटा, उसके एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस की जरूरत जरूर पड़ती है. और बिजनेस की दुनिया में अगर कामयाब होना है, कामयाब होने के लिए वक्त पर इन्वेस्टमेंट साथ ही फंड्स मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है. और ऐसे में एसएमई सेक्टर पर ही नए तरीके से कैपिटल कैसे जुटाया जा सकता है, न्यू एज फाइनेंसिंग की यहाँ पर बात करें तो आखिर उसका फॉर्मूला है क्या, इन सभी पर हम बात करेंगे हमारे इस खास सेशन में. अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी TV9 कन्नड़ के मैनेजिंग एडिटर आर श्रीधरन. इट्स सो गुड टू हैव यू विद अस टुडे. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम and join again on stage
बातचीत होनी है और फाइनेंसिंग की और बिजनेस की बातचीत होनी है, तो आई थिंक इस सेशन में हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये पता चल जाएगा दिनेश कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इन्वेस्ट ऑन द करेक्ट टाइम एंड हाउ, और साथ में ये भी कि कैसे फंड्स जुटाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चीज की शुरुआत बगैर मुद्रा के हो सकती है क्या? बिल्कुल। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मनी एंड फंड्स। कैसे वो फंड्स जुटाए जाने हैं, फंड्स के लिए तमाम तरह की बातें अभी हमने सुना। मंत्री महोदय भी ये बता कर गए कि कैसे उद्यमियों को फंड्स की कमी ना हो, सरकार ने उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्या ये वाकई सब कुछ इतना स्मूथ है या आज भी वो समस्याएं अपनी जगह कायम हैं जिनको ये उद्यमी चाहते हैं कि जिनके लिए कुछ किया जाना चाहिए? क्या बहुत आसानी से उनको फंड अवेलेबल हो, ये इंश्योर किया जा रहा है? फंड्स की अवेलेबिलिटी तो इंश्योर कर दी जाए, लेकिन साथ में उसके बाद चैलेंजेस उनके लिए भी होते हैं जो फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराते हैं। मसलन ये कि वो उद्यम फले फूले बढ़े और जिन्होंने मदद की है तब फंड्स के जरिए उन उद्यमियों की, उनको उसके लिए न सिर्फ उनका मूल उनको वापस मिले, बल्कि उसके साथ वो प्रोत्साहन भी उनको वापस मिले जिसके जरिए वो और लोगों की मदद कर सकें। ये जो चेन है, ये जो एक इकोसिस्टम है, ये कैसे काम कर रहा है, अब आगे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले मंच पर एक बार फिर से श्रीधरन के साथ खास मेहमान को बुलाने से पहले दिनेश ये जरूर चाहूंगी कि इट्स सच अ डिलाइट टू स्टैंड एंड एड्रेस यू ऑल हियर, बट दिनेश 3 साल से आप इस मंच के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे तो पहली बार मौका मिला है। आई थिंक यू माइट हैव लर्नड अ लॉट through these entrepreneurs who are present here and through all the business leaders who have actually joined us here on such a platform where they are sharing their views, putting it through words, and I think it's actually a delight, seriously, to stand and address here, but I think a great learning also from this stage. ये बिल्कुल सही बात है। ये देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है कि आप एक नपा तुला जोखिम कैसे ले सकते हैं जो उद्यमी लेते हैं। ये आसान नहीं होता है। जब आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं तो हमारे समाज में एक रवायत है, ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है, कि आपको उत्साहित करने वाले लोग कम मिलते हैं और ये बताने के लिए कि ये क्यों नहीं होगा और इसमें दुश्वारियां क्या हैं, क्यों आपको रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी तादाद दुर्भाग्य से ज्यादा होती है। तो आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग कम होते हैं और ये बताने वाले कि आगे मत जाना, बहुत सारे जोखिम हैं, खतरे हैं और तो हो सकता है तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाएं, ऐसे ही ठीक है। स्टेटस को में भरोसा करने वाले लोग ज्यादा हैं और जोखिम लेकर कदम आगे बढ़ाकर और दुनिया में ये साबित करने वाले कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये बताने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने अंदर ये अलग जगा कर चलते हैं कि मैंने जो सोचा है, मेरा जिसमें कन्विक्शन है और मेरा जो भरोसा है, मेरी तैयारी बेहतर है, मेरा होमवर्क पूरा है और मैं आगे वो करूंगा जो 4 और लोगों के लिए मिसाल बनेगा, ऐसा जो लोग सोचते हैं, आज उनमें से ज्यादातर यहां हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उनको सम्मान दूसरे तमाम बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम होता है, इसलिए उनके लिए एक बार फिर से हम लोग यहां मंच से तालियां बजाते हैं। Well, Dinesh, I'm a Delhiite, a full-fledged Delhiite, but in Mumbai today, with all the business leaders, and being a journalist, I'm really very inquisitive to know what to do, how to do, and when to do this when it comes to money. And Dinesh, if backstage you're not going to share your experience with me anymore, I'm not going to spare you. We are really going to have a big round of a question-answer session now to understand what is to be done and how. Whereas, I think now we are ready for the next session. And if Mr. Sridharan is here, then we can pursue ahead. And yes, so we were eagerly waiting for you, sir. वरना दिनेश तो inquisitive सवालों का जवाब देते-देते यहाँ पर थक जाएंगे क्योंकि मेरे सवाल खत्म नहीं होने वाले। क्या करूँ सर, जर्नलिस्ट हूँ। दिनेश जी हो और किसी की जरूरत नहीं होती। सर तभी तो मैं कह रही हूँ मेरे सवाल दिनेश के आगे ही है। श्रीधरन जी उन लोगों में से एक हैं जो हौसला बढ़ाते हैं, एनकरेज करते हैं। मैं कह रहा था कि बहुत कम लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं, लेकिन वो हमेशा से उन लोगों में से एक हैं। और आज तो मैं सर आपकी हिंदी सुनकर दंग रह गया। क्या बात है, अंग्रेजी और हिंदी ऐसा प्रवाह और ऐसी कमांड। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, आइए इस चर्चा की तरफ। बिल्कुल, और श्रीधरन तो फिलहाल मंच पर आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ इस बातचीत में अब आगे शामिल हो रहे हैं अजय ठाकुर, हेड BSE SME एक्सचेंज। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं महेंद्र कुमार चौहान, चेयरमैन फिनोमैन। रिक्वेस्ट करेंगे राहुल चौधरी को भी कि वो मंच पर आए, मैनेजिंग पार्टनर एट N+1 कैपिटल, Mr. Chauhan, you also. CBD, owner and promoter. Sanat Patel, board of advisor of Charge Zone and co-promoter of Landmark Group. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर। Well, we have 3 of the guests joining us.
We're waiting for the fourth guest to join us soon. Yeah. So thank you once again, Dinesh and Surbhi. As you can see, one chair is vacant because we're still expecting Ajay Thakur from the BSE Small Exchange to join us. He'll be here momentarily, I'm told. But let me get the panel underway anyway. So the panel that we're discussing right now is on new age financing for small and medium-sized entities. I think this is a particularly appropriate topic for now because the buzzword right now is the funding winter. Everyone from India to even the US, Europe, everyone is flabbergasted by the sudden turn of events and the tightening of monetary policy, which we have witnessed across the world, largely because of inflation. But truth be told, our SMEs have always lived in what I would call a perma-winter. What do I mean by a perma-winter? It's a permanent winter for them, right? Because they're always struggling to raise money, they're always struggling to get a bank loan. In fact, according to RBI's numbers, the demand for credit in the SME space is about 34 trillion rupees, whereas the availability is less than half of it, right? So now that's a huge gap that always remains to be filled. Imagine it's like you are an athlete who can actually, who actually needs, let's say, 3,000 calories of food every day to perform at its optimal level. And what you get is only about 1,500. So that's literally what is happening with our SMEs, which is that we are starving them of capital to grow and race ahead. So now we have a wonderful panel. We have people from hardcore financial background. Rahul, there's Mr. Chauhan, Sanit, who's a promoter. He'll bring that perspective. So let me start with Mr. Chauhan because he's a hardcore banker. Chauhanji, if we look at the availability of credit to SMEs, 90% of the money still comes from scheduled commercial banks. Yet, the sad part is the banks have not been very innovative in terms of coming up with new products which can help SMEs raise money. So why do you think banks are reluctant to innovate in terms of new products and make it easier for our SMEs to raise money? Thank you, Shridhar. First of all, thank you, TV9, for inviting me, and congratulations to all the award winners who just received the awards. Before I answer your question, Mr. Sridharan, I must come to the basic topic itself. So the topic is raising money in new ways. And I think as we talk today, COP27 is happening in Egypt. And one of the new ways of becoming a sustainable business is reducing your carbon footprints and becoming a not only environment friendly, but also socially responsible organization. And therefore, my message to all the SME people who are here present and who are listening to this channel is that there's a myth that to be profitable, if you go sustainability path, you may not be profitable. But today it is possible to be sustainable and to be profitable. So I think if the SMEs work on making themselves just two little things. One is reduce your all negative footprints in terms of carbon footprints and social footprints and expand your positive footprints. So that's one message I'd like to give. Now, this is not only their responsibility because SMEs, not only in India but worldwide, are the backbone of the entire economy. Absolutely. And therefore, they are the vendors into supply chain for the larger companies, including multinational companies. And therefore, to provide the green technology and the know-how to these small and medium enterprises is the responsibility of large companies because supply chain is becoming an extremely important issue in sustainability. Because I advise IFC World Bank Group and other companies on ESG, these three golden words which have become now environmental, social, and governance. Almost all investors and regulators today and civil society members are asking these questions, including these two hardcore investors who are sitting nearby me, and including Mr. Thakur, who is from the SME exchange.
So that's the initial part. So why are banks slow to innovate? That was my question to Yes. you. Yeah. So the answer is quite a few banks have innovated, yes, but a large number of them need to do it. And they have innovated through digitalization. I hate to say this, but one single largest advantage that we got during COVID period was that there was a great push for digital. And therefore, MITI, which is Ministry of, technology, they announced, and I happen to be till recently the founding chairman of Fino Payment Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, and Fino Payment Bank were given the award for the best digitalized bank. So these are a handful of banks who have become digital, have taken banking to the doorstep of people for SMEs. They have innovated the products and all. But a large number of banks, you're right, need to work on this. Right. So Rahul, you sit on the other side of the table in some sense. I want to probe a little bit on the lack of innovation. Is it perception of risk with SME as a category, or is it lack of access to information which then allows you to weigh that risk, which keeps new products or access to credit for SMEs limited? Yeah, so I think, for me, firstly, I'm a great believer in the SME space. This word lack of information or access to information, I don't want to make this political, but since the last two governments have been here, information is very easily accessible. That is for a fact. We only lend money when we have GST data. We will not lend money to anybody. It's very clear. And it's the most easily accessible data. Second, I think the promoter quality. There is no question, yes, the newspapers have to print what they have to print. But in general, I think the quality of entrepreneurs is exceptional today. You look at what is coming out of the ecosystem. He's an entrepreneur. I've sold 2 businesses and then started a fund. Just the quality, maturity, understanding of where capital should come at what point of time. So I actually believe banks have been very slow. The reason why we exist, we're the first fund in India that is created a revenue-based fund. It's a 750 crore fund. We have deployed that money in the market already. We have already substantiated 42 entrepreneurs with about 400 odd crores of capital. We will churn about 100 entrepreneurs who will get about 10 to 20 crores. So I think banks are very slow, and that's not got to do with how slow the bank is. That's got to do with the way banks are set up. Because if you are only going to use collateral as a mechanism to lend money, where is an SME going to get any collateral from? Exactly. And that's the key question. You have to change the mindset. So our security structures are not based on any kind of personal collateral. My background, I'm an army officer's kid. When I built my first business, I gave away 48% of equity in my first company. And I had no option, right? What would I do? But today I have a fund like ours or many other options available in the marketplace to raise money. But banks have been slow, and I think they're getting there. The new age banks, Kotak is doing a great job. I think ING has done a very good job in the emerging markets group. But not just SMEs. I think the whole elaborate marketplace of saying what is happening with, non-dilutive capital, and that's the key word. Because SMEs today either don't want to dilute or can't dilute. They don't understand this whole equity world. And so there are multiple options out there. And banks have been slow, but they'll get there. I think they'll get there. Yours is probably one of the newest forms of financing which has come. So we'll talk about that, and I want to go a little deeper into that. But I just want to start at some broader questions. So I'm going to ask Sanit this. Sanit, one of the complaints that one hears about bankers usually is that while they're giving you debt, they want returns like equity, the protection of debt, but the returns of equity. So have you faced that in your journey as an entrepreneur? Yeah, definitely. I think when you're starting up, there are a lot of difficulties you face in terms of financing. But I guess nowadays, like Rahul said, venture debt has sort of really helped young entrepreneurs to not dilute their equity. And of course, it comes at a cost. It's expensive, but when you don't have collaterals, there's not much you can rely upon.
So yeah, equity and venture debt have been sort of supportive when loans aren't a option, you see. So obviously, Ajay, that is not a problem that people who come and list on your small exchange really worry about. So if I am an SME, how should I weigh the question whether I'm ready for a listing, or what would you look for in, let's say, a listing candidate? We'll talk about the other problems of why the SME exchange is not as vibrant as it could be in terms of the volumes and participation of investors. But broadly, what would you look for in an ideal candidate who can list on a BSE exchange? So we have made the SME platform very simple since the day of inception. What we say that any SME which is in existence for last 3 years with 1 year of operating profit in the preceding 3 years with net tangible asset of 1.5 crores and positive net worth can get listed on the SME platform of the stock exchange. We have seen last 10 years, we have seen company as small as having a turnover of 5 crores with a high turnover of 600 crores getting listed on the SME platform. But the basic question what arises is that, is the SME lack the skill sets? Of course not. The basic problem with the SME is what I have found, because in last 10.5 years, I have met almost 37,000 SME promoters across the country, done more than 2,500 to 2,600 seminars. I found that the financial literacy is very less, especially related to equity market. Recently, SEBI has done a survey and found that only 5% population understand the financial, jargons and all those things. The second very basic fact is that does our promoters understand how to get funds? Rather, talking about that banks are not giving funds or microfinance companies are not giving funds and all those things. We must need to understand that banks are not owner of the funds. They are the trustee of the funds. They have to secure the funds. So we have to handhold the macro, small and medium companies. We have to ensure that we have to that take it from the informal sector to formal sector. They should have proper financial structure. They should have proper financial statements. They should have proper cash flow. And we can give them the finance at affordable cost. That is very important. I always believe that banks have done incredible job and in giving the loans at very low rate of interest. But at the same time, we have to make the SMEs strong enough, financially literate enough, so that they can also secure funds from these financial institutions. That is very important. Equity market, of course, after meeting 37,000 SME promoters, we have been able to convert 407 companies onto the SME platform. And these 407 companies have raised almost 4,800 crores. But the value that they have unlocked till today is almost 64,000 crores, which is a big number. And let me tell you, all the SME promoters who have come on the SME platform are very happy. So I think that almost all stakeholders should ensure that they should not burden the SME with only debt funding. Because over leveraging of balance sheet is very bad, whether it's debt or it's equity. So we need to create a balance sheet, not an imbalance sheet. Right. The 37,000 SMEs whom I have met, let me tell you, in most of the cases, I found that the turnover varies from 10 crores to 700 crores, where the profit in 95% companies are in the range of 5 lakh rupees to 2.5 crores. And many of the times it also gives me an impression that SME is not working for the expanding the company or making it more profitable, but where they are more worried about servicing the loan. So we need to ensure that we should not overburden this company or over-leverage this company so that they become imbalanced. We should make a proper balance sheet with proper debt and equity ratio. Point taken. Ms. Chauhan, I think last year you got the commercial bank status as well, right? FinoBank. So obviously you are now going to be perhaps aggressively chasing commercial lending as well. I must clarify, since I'm on a public platform, that as of May 2022, I have retired from Fino Payment Bank as the chairman. I was the founding chairman and we took the company to IPO, but nevertheless I can answer your question. Sure. So as a relatively late entrant to this space, you are using technology to be asset light.
Is there innovation happening on the product front as well using technology? Yes, I think technology is panacea for most of the organizational problems, I would say. Today, private equity or venture capitalist or any other investment, including the financial investors, they look at the SME as to, are you gearing yourself to solve any problem of the society? And if you want to scale up your solution, technology is the answer. And therefore, innovation, again, to quote late C.K. Prahlad, that sustainability is the mother lode of innovation. I'll come back to this because today, Sustainable Development Goal, climate action, these are the 17 sustainable goals are becoming extremely important. So if banks as well as the investors both become focused on how to scale up the solutions using technology, answers will come in. But let me also touch upon a little bit another point here. You are saying, and the major problem for SMEs is to attract the capital. And you also said, Mr. Thakur, that their understanding towards finance is less. I think one of the smartest things for small and medium enterprises is to make themselves attractive. And how can they do it? Is by constructing their board. And board, I don't mean the legal board, because it's very difficult for them to attract board of directors because of the legal issues. The board of advisors. Today, I am involved with a non-profit institution called Asian Center for Corporate Governance and Sustainability. I'm one of the founding members of that, along with Marvin King. We have a network of 2,500 directors, and at least 30% of them are willing to give their services pro bono as advisory board to these SMEs. And therefore, 8 to 20%, as high as 20%. So what gave you the courage to wade into this space with a totally new product? First of all, tell us what revenue financing is all about. And is it a safer bet compared to, let's say, a pure debt or even a dilution of equity? Yeah, so I think, the world has understood equity as an asset class. The world has now understood venture debt as an asset class. They come in, give you a certain amount of money, fixed coupon, and a warrant structure. So it's not fully non-dilutive. We are a fully non-dilutive asset class. What does that mean? Any company that meets 4 principles. Principle number 1, the company has to be 3 years old, so vintage of 3 years. Company has to have gross margins of 25%. Company should have grown 25% year on year. And the company should have a net revenue. We are not equity investors. We don't understand the word GMV. We understand net revenue. हमें धंधा समझ में आता है ये GMV, VMV is not our cup of tea. So net revenue should be a minimum of 1.5 crores a month. If you meet these principles, you will then enter a funnel, and then there's a whole, credit analysis, and I won't get into that. But if the company qualifies and we are willing to take a bet on this company, we are just short-term working capital providers. I agree to the panelists to say, debt, don't over leverage, but there's an optimization of everything. How do you bring your business to a sustainable format when you don't want to raise equity? There are lots of founders, Shri, who don't want equity. I will never take equity again. I want to build sustainable businesses. That is my goal in life. And there are lots of people in my clutter. There are people also at the same time who want to balance debt and equity. So we are short-term capital providers. I will provide capital for 12 to 24 months only. But that is what will get you growth at the right price. Yeah, so what is the price? Price is a determinant of risk. There is no right answer or wrong answer to this. It is a determinant of risk. Like he said, I am a custodian of LP capital. We have corporate treasuries and banks who have invested in us. So I'm a custodian just as a bank is. So the price is determined as long as I can get a portion of your net revenue every month and bring back principal and a percentage of the coupon back. That is how I lend. So give me a range. So it will be anywhere between 16 to 18%, right? But please realize I'm not taking any personal guarantee. I don't want your house. I don't need anything. I just need a security structure, which is a little more complex, but I need to bring back the revenue every month. So it's a percentage of your sales. And that is a very unique structure compared to what everyone else does. And that is,
done very well for promoters who don't want to dilute or who want to gestate the dilution. Tomorrow, if you want to do an equity round, you can wait it out. You don't need to take the money today. And that is what is helping these entrepreneurs today in the SME segment, or someone like Charge Zone, let's say he wants to raise 20 crores because he has an order today. The bank will still take 3 months. आप कुछ भी कर लीजिए, बैंक को 3 महीने लगेंगे. It is a fact of life. We will enable that capital in 4 weeks. Please realize I am still a very, very disciplined, conservative lender. We only lend in the top 6 cities in the country. We're not going to, our hands and feet cannot go anywhere else. We will only lend out of 2 out of 10 companies that we watch because we want to pick the best of the litter. And we want to remove our risk. Obviously, I want to be the lowest on the risk curve. So revenue-based debt is the newest format of non-dilutive capital. Our second fund is exactly double the size. And it is an absolute growing asset class like venture debt is. And venture debt only follows equity as a principle. We are agnostic to equity. If you have no equity, it doesn't matter to us. We're agnostic. As long as revenue is there, you'll fund As long as revenue is there and I can take a portion of that revenue and bring it back. Right, okay. Sanit, as a promoter, as an entrepreneur, obviously you have the option of looking at multiple, equity or debt or any source of capital, with equity, debt or hybrid. So given what you heard so far, what would you really be inclined towards which allows you to keep control of your company, because that's, as an entrepreneur, that's your first, I would imagine, priority, and still you need capital for growth. So what is the trade-off you're willing to make as an entrepreneur? I think the answer to your question lies in what stage of the company you are in, right? We've had, Charge Zone has used revenue-based financing as well in the past when certain other modes of finance were not optimal at that stage. So it depends on where you are in the company's life cycle. Revenue-based financing has been, I think, really, Charge Zone has been able to use it really well at a given time. Now when the company is growing, venture debt is also a very good option. And I think equity dilution, it all comes with your unit economics and profitability, especially now in the given current economic situation, where investors are focusing more on profitability when finance is not easy. So I think if you have strong unit economics and you're raising a larger round, equity dilution is something that really helps. But for shorter given span of time, I think debt, in whether it's revenue based or venture debt, I think it helps also. Ajay, I'm sure a lot of SMEs which are here would probably fancy listing themselves one day. And they probably would also. But from an investor participation, I don't think there's a whole lot of excitement because illiquidity of some of these stocks remains a major problem if I'm an investor, right? I get into an SME stock and then I'm just stuck with it. There's no volume. There are no trades happening. How does BSC plan to address that, if at all? From day one, we were aware that this SME equity dilution and the volume will be a question mark there on the SME platform, because we have introduced the concept of lot size, and we don't want the retail investors to participate. We want the informed investors to participate. One thing I always tell from various platforms that, a stock market is the safest place for the promoters and riskiest place for the investors. So SME platform is, of course, is very risky because here you don't have the investors who are behind you and telling you that year on year you give me 15, 20 or 25% return. It's the risk that they are taking on your company. If you are performing better, if your profit is going up, they are not asking you to share the profit. They are ultimately making the returns on the capital appreciation that is happening. So that's why it's a very risky platform, and that's why we want that the retail investors should not participate. In fact, involved investors or the investors having deep pockets should invest in the capital market. As far as the liquidity question is concerned, we have already introduced the concept of market making. So market makers are there who provide two-way quotes. So if the buyer wants to buy the shares and there is no other investor to sell those shares, they can buy from the market maker. And at the same time, if they want to sell or take an exit,
no one is there, then the market maker is there to buy those shares. Right. So that mechanism is there. Not only that, we have also provided a graduation from SME platform to the main board of the stock exchange. So if you are listed on the SME platform for 2 years, and after that, if your market capitalization has crossed 25 crores, and your post-issue paid-up capital has crossed 10 crores, then with 2/3 non-promoters approval, you can migrate to the main board where the liquidity starts increasing. So SME platform per se is a platform of wealth creation. It's not a trading platform. At no single point of time we have said that SME platform is a trading platform. It's Right. like maturing the SME promoters. Therefore, we have reduced the compliances here in comparison to main board of the stock exchange. And slowly, we want the SME promoters to be more compliant, Right. more transparent, more creditable, and so that larger investors start participating. Right. That's an Therefore- important point. And on that note, I want to ask Mr. Chauhan a question because the issue of delay, the turnaround time on loans came up in our discussion. So as a banker, what would you tell the SME promoters here? What should they be doing so that they can speed up the process at their end, which again, to my mind, would be, again, digitization, more use of technology, greater transparency. What would you tell them? I think most important thing is working capital management. The biggest issue with this SMEs is which is where they go, they are topsy-turvy or thrown out of the gear, is because their working capital management, there's a mismanagement. Not that it is intentionally mismanagement, but it's because of certain unawareness. Therefore, the finance management has to be very, very tightly controlled. Cash flows have to be very, very tightly controlled. So focus on that. If you don't have in-house capability to do that, hire consultants. They will pay for themselves. Don't think they are costly. And that's the mantra I can give it to them. Right. See, one thing, let me also emphasize on this, that Reserve Bank of India has recently come out with a report whereby they have categorically said the listed SMEs have performed better than the unlisted companies. So you can understand what I am, focusing on. That Compliance unless and until you everything, take the help of both debt and equity, and let me tell you, when you are raising the equity funding, it can take care of both capex and opex. It's not like that you are not going to use it for working capital, or you can't use it for expansion, or you can't use for reducing the debt. It's not like that. Right. Second thing, today the market is matured enough, and it requires all sort of products. It requires short-term funding, long-term funding, bank funding, funding from microfinance company. So all sort of funding is required by the promoters, and I think this is the right time when the small and medium enterprises use these resources, use the service of the consultant, use both the debt, equity funding, and grow their business. Remaining in the shallow or in the well is not going to serve any purpose. Right. Okay. So I think the final question, Rahul, I want to ask you, SPAC or common pool companies, as they were known on, let's say the Canadian exchange, or SPAC as we call them in New York. Is there something like that possible for the SME space in India? Do you see that happening at some point? To my limited experience, no, but maybe he'll know more than that. I've not seen it. I've not heard too much yet, but maybe you're the better person to answer. So very quickly, Ajayji, is a common pool company or a special purpose acquisition vehicle model, could that come for the SME space sometime soon? See, we have to see what is the structure of the company. See, there is a problem with a special purpose vehicle company. The problem is that for each project that a special purpose vehicle is meant for, and after that purpose is completed, then it is stopped. Not a single investor or promoter will like to get associated with those type of companies. That after the project, there is no existence of that business. So yes, another thing can happen, that it can be a holding company on the top, and inside there will be various special purpose vehicle company. And that holding company can come with the IPO in the capital market. We have seen, Bajaj Holdings and there are few holding companies which are listed onto the exchange on the main board, and in fact, they have unlocked huge value for themselves. But see, just to your question, all the SPACs in Canada and the US, I'm sure you track it, you know what's going on. I don't think India needs that. And I'll say one thing, but there are some senior people who've been in this business longer than me. I think our regulators are just amazing people. Yes. SEBI and RBI, by far,
Nowhere in the world do we have regulators like this. They beat you down to the last minute to get you to do your stuff. And that is commendable in our country. I agree with Absolutely that. commendable. Completely agree So with that. I'll completely endorse what Rahul said. You know, our regulators are world class, and they may not be as vocal, but they're observing. Well, that should be reassuring to all our SMEs that at least the financial market is in good shape and it's in good hands, and there are good people keeping an eye on the monetary system and the financial market. With that, let me thank the panelists for some wonderful insights they've given us and shared with us today. So, gentlemen, thank you very much. And I'm sure you probably want to interact with some of the SMEs who are out there and share some of your thoughts, even in greater detail with them on how they can scale and raise money for growth. Thank you very much. Thank you, Shri. Thanks, Shri. बेहद धन्यवाद आप सभी का। फंड्स कैसे जुटाए जाएं, ये $1 मिलियन सवाल होता है हर उस आदमी के सामने जो अपना कोई उद्यम शुरू करना चाहता है, और उसके लिए निश्चित रूप से ये बात प्रेरणा से सिर्फ काम नहीं चलता। इंस्पायर होना बहुत आवश्यक है, तभी आप कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में पैसे कहां से आएंगे जब ये आप समझ जाते हैं तो आपकी दुश्वारी हल हो जाती है। बहुत धन्यवाद। और एक शब्द जो लगातार हम अपने आसपास सुन रहे हैं वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है ये समझना बड़ा आवश्यक है। ये सुना तो सबने है, लेकिन होता कैसे है और इसके लिए क्या लगता है, ये बताने के लिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं टेक महिंद्रा के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर संदीप चांदना। जानेंगे कि कैसे उनकी कंपनी ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा सवाल होता है। वन टाइम वंडर होना आसान होता है, एक बार किसी को अपने चमत्कार से प्रभावित कर देना आसान हो जाता है। हालांकि चमत्कार को हमेशा से नमस्कार होता रहा है, लेकिन ये चमत्कार लंबे समय तक चल सके, ये कमाल जो आप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल इस लिहाज से हो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो। मतलब उसमें अगर आपके लिए सिचुएशन विन है तो दूसरे के लिए भी विन सिचुएशन होनी चाहिए। और ये विन विन सिचुएशन कब आती है, सस्टेनेबिलिटी का ये मॉडल किन पिलर्स पे खड़ा होता है, ये अब हम अपने अगले मेहमान से समझने वाले हैं। Thank you so much. And it's an honor here to be really associated with TV9 and SAP, specifically for Tech Mahindra. While I speak, you know, the last session that we had touched about ESG right from bottoms up to see that how it is really impacting the companies. And in fact, that becomes a base for me to start today that how important it is for ESG today to be imbibed into this boardroom discussions. And from a Tech Mahindra's perspective, we started this journey about 15 years back. That was the time when I was brought in as a Chief Sustainability Officer. I've not got promoted, that's a separate thing. But what has really happened is that in all these last 15 years, we have documented, we have learned our own way that what are the best ESG practices, okay? And today, very proudly, when I stand in front of all of you, we at Tech Mahindra lead the world, not India, lead the world in the ESG space. You look at any benchmark, whether it's Dow Jones Sustainability Index or whether it is CDP's, any benchmark you will find Tech Mahindra rated #1. Now, while we learned all this of our own, we have now started going back to our customers saying that this is our learning and these are the things which we can help you implement in your ESG journey as well. And while we are doing that, we are also picking up the kind of platforms, the kind of technology, the kind of consulting that we are really building up around the whole ecosystem of eco-design and the environment as such. The platform that we have really built, and this is where we are working very closely with SAP, is I.Sustain. This I.Sustain is solving the basic problem of ESG. That is,
how the data has to be captured, how the data has to be reported, how the data has to be analyzed, and how that data will also help you to take your decisions quickly. This will help you with scenario planning. This will help you with net zero data modeling. So from every perspective, this becomes a one-stop shop for any ESG problem that the world faces today. And this is what we are really working towards. There are a number of other things that we really spoke about today was how the risks are being mitigated. We just heard about the banks. How are the green loans? And how are we really working in terms of green finance? One thing that is really missing out is the technology. And that's a place where SAP and us are working together. Thank you so much. Thank you so much. Sustainability. सस्टेनेबिलिटी की बात जब आती है तो ये जीवन में बड़ा मुहाल है कई बार कि आप सस्टेन कैसे करेंगे. शादीशुदा लोगों से ये सीखा जा सकता है सस्टेन कैसे करना है. वो बेचारे बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे. और सस्टेनेंस, ये मुझे वो शेर भी याद आ रहा है कि उद्यमी बहुत मुश्किल से कोशिश करके अपना एक मुकाम बनाते हैं, तो खुद ही को करके बुलंद चढ़ा वो जैसे तैसे. देखने वाले ने कहा चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे. ये उद्यमियों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएं और अनवाइंड कर पाएं और कुछ ऐसे लम्हे उनके लिए जिंदगी में हों जो शादीशुदा किस्म के ना हों, जहां वो हंस पाएं, खिलखिला पाएं. मैं रिस्क ले रहा हूं. Before you comment more on that sustainability, will I take that cue to move forward और ये बता दें कि अब वक्त हो चुका है हंसने हंसाने का. और कहते हैं खिलखिलाती हंसी के बिना कामयाबी का जश्न भी अधूरा है. हमने तो ना जाने कितनी बार सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से ही मैदान फतेह किए हैं. बहुत आवश्यक है ये. मुस्कुराएं आप. He came, he saw, and probably he loved a bit and won. तो हमारे बिजनेस लीडर्स के लिए पेश है लीडर्स ऑफ लाफ्टर, राहुल सुब्रमण्यन. लेकिन उससे पहले कि हम उनको यहाँ स्टेज पे बुलाएं, आप सबसे एक दरखास्त, वीडियो ना बनाइएगा, केवल देख के एंजॉय कीजिएगा. True that. Please let that exclusivity remain. Request not to please capture that in your camera. Be with us, enjoy the movement and laugh. या उनके आने तक हमको यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं. महाराज आप कहाँ हैं? आप नजर नहीं आ रहे हैं. कहाँ से आप नमूदार होंगे? और मुझे लगता है जब तक तालियां नहीं बजेंगी ना तो वो मैं सबसे पहले बहुत जोर से ये बजाने वाला हूँ. बहुत स्वागत है आपका. कहाँ छिपे हुए हैं आप? राहुल सुब्रमण्यम जी, आप भी पूरा भाव खा के आते हैं महाराज. हैं आसानी से नहीं, पूरा एकदम. मुझे पार्किंग में रखा था इन्होंने इतने दिन, तो मुझे आने में टाइम हो गया. बताएं कैसा फ्री पार्किंग है या चार्ज लग रहा है? पता नहीं, मैंने 2-3 के पार्क भी कर दी गाड़ी वहाँ पर. But all yours. But thank you so much. Thank you so much. Hi, how are you, all of you? All right, okay, nice. You all seem very excited and energized, huh? Yeah, look at the face. It's been a great evening so far. Yeah, okay, lot of learnings. Wow, is this really your enthusiasm, guys? Come on, guys, we have to do much better. Did you guys have fun till now? Honestly? Okay, I believe you guys. I believe 4 of you responded. Firstly, thank you so much for having me. How many of you know me or seen me? Just raise your hands so I get a sense. All right, that's not bad. That's 16%. I'm very good with math. For others, oh God, it's going to be tough. Let me introduce myself. Firstly, I am a stand-up comedian. I do this for a profession. I crack jokes and hopefully people laugh, right? But I was not always a stand-up comedian. I worked as a corporate guy, just like you guys. Yeah. I worked for 5 years and then I quit. I worked as a brand manager because I have an MBA in PPT. It's a very important specialization. You have to sit in AC cabins and say things like, "वो लोगों का red थोड़ा 2% से कम करना." It's a tough job.
Any marketing guys here? Any brand managers? Anybody? How does it feel to be an overpaid executive, sir? It's a tough job, right? Because you have to say things confidently without data. Customer is king, and never meet a customer in your entire life. That's tough. And salespeople come and say, your king is asking for discounts. I worked for 5 years, then I quit because gratuity is important. You guys know, right? Gratuity? Yeah, it's a mysterious thing, man. I didn't even know what is gratuity. I went to my HR and I said, I want to quit. And my HR said, you have completed 4.5 years. If you complete 6 more months, you'll complete 5 years. I'm like, great mathematics, what's the point? He's like, no, Rahul, if you complete 5 years, you will get gratuity. And there's something about the word gratuity, you want it. Friends, I'm sure all of you are doing well at your job and you're happy. But at any point of time in life, if you decide to move on, one advice, don't let this gratuity stop you. Because I fell for it. I completed 5 years and then I collected my gratuity of 18 rupees 50 paise. It's just not worth it, guys. Now, for those of you who have seen me, again raise your hands. I just want to see all of you, those who have seen me, who like my stuff, okay, keep your expectations low. Because as you know, this is a corporate show. It's very different from a public show. Right? In a public show, people are like, I want to hear you. In corporate show, it's like, tu nach. Tu nach to. Corporate shows are very different because unlike public shows, you know something happens in a corporate show. Before a corporate show, there is a briefing session where corporates tell comedians how to do comedy. It's a very enriching experience, yeah. You get standard instructions like one, Rahul, don't use the F word. Don't use the F word because as you all know, you're all at a very young and impressionable age right now. They don't want you to learn words that you have no meaning, you have no idea. So I will not use the F word, all right? Because today I'm not comedian, I am service provider. But every time I have to use the F word, I will say garlic instead. Right? So that we stick to the rules and the message is conveyed. Is that right, guys? Fine? Okay. Second, don't do sex jokes. And I'm like, why? Because they're all professionals. Basically, you guys are so good at it. So these are the 2 rules we'll follow. I'll talk about my corporate life. I'm not going to name the company because I'm going to make fun about my experience there, like basic corporate ethics, right? Our MD Anand Mahindra was very particular about it. So I'm not going to go there. First of all, I have to tell you, you guys are amazingly tough audience, huh? Look at that. I'm like, I recently went on a tour, guys. I know it's unbelievable. My first international comedy tour as a solo actor, performer. I went on a tour of US and Canada, and it was very amazing, guys. I landed